So, hello, here this is my first live, and to make things crystal clear, I'll be picking up a language, probably called as the hardest language, and will be up straight here in the live for the next 24 hours. And in that next 24 hours, I will be completing a complete course on C language. The aim of the live stream is to go from the basics. I am at basics to advanced level and in C. Yeah. So by the end of the video, if you are with me, you'll be expecting a drastic difference from the time you came to this video and by the time you will end in this video, because you will see how you can follow up with me to reach the advanced level in the C language. Talking about C language, as I have heard from many people, I have been to many classes in the semester 2 of BITS Pilani, that C is the mother of all languages. Whatever languages you see, Python, Java, all have been derived from C. C was the, I think, second language, I think third language that was made. The first programming language was called A, and the next programming language was called B, and then the third programming language was called C. That was the reason it is called C, and it is very fast to write to the date right now. It is the fastest programming language. Like, it is very fast in comparable to other programming languages. So that's it. And I will be using Ubuntu Linux operating system on my desktop to write the programs. There is an IDE that is primarily for C language, which will be what I will be using to write code. You can see on my title, I have written from basic to advanced what tutorial will be following. So we will be following Code with Harry as our tutorial master, from whom we will be learning from basics to advanced. So thank you, Code with Harry, for your video. Though I'll not be following his latest video because I found learning a programming language in pre AI era is much better than learning in the post AI era. AI, in the sense, is very helpful, but I don't think it's a good way to start your programming language journey, because it's not about the time it takes, it's about the depth, and the depth always comes from the traditional approach of learning. It will be books if you go very back, but right now, the best source we have is our lectures. And among the lectures, I would want to be following the best one. Without wasting more time, I'll go straight to the topic. Right. I'll share my screen. Okay, share a tab. Yeah, what tab? I need to uh, go to Google and search for youtube.com. There I'll be finding the link to his tutorial. Code with Harry. So here we'll be finding the link to his tutorial, Code with Harry. Harry C language. There are 76 lecture. Let's see, because it's in 2020, best time to learn programming language.
That time also the person would have put his best effort to learn. Yeah. I also make sure that people can also hear the video because that is very important, right? Yeah. Allows here tab audio. Yeah. Cool. So set as default. Yeah. Set default. Right. Cool. So I think it is visible. Wow. So you can see, I also want to check if my stream also stream the audio because audio is very important. Code with Harry. See, no, I don't have to search. I have to search the Mistral Live. Huh. Learning the hardest programming language. 24 hours. Okay. प्रोग्रामिंग के चैंपियन बन जाओगे। हाय गाइस, सी प्रोग्रामिंग की सीरीज में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हैरी इस कोर्स के दौरान आप लोग का इंस्ट्रक्टर रहूंगा। सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स का ये कोर्स यूट्यूब पे एकदम फ्री में रिलीज किया जाएगा। ये कोर्स उन सभी लोगों के लिए जो कि सी प्रोग्रामिंग जीरो से लेकर प्रो लेवल तक सीखना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आप लोगों ने कंप्यूटर Okay, works. By the way, you can debate on chat if C language is actually the hardest language. I don't know though. I mean, I know it. It's not hardest. C++ is hardest. It's a good language, by the way. I'm thinking if I can also show you. You can follow with me, right? I mean, I'll be watching this video one by one. I can't show you my codes. Sorry. Mm, what I'm thinking. Yeah, I have to go to YouTube Studio to delete one of the video. I don't want it to be there. Mm. Let's keep the video channel dashboard. तुम साथ हो फिर हम हैं मेरी. I want to delete this video.
This is a to video devices live 10:14 today. Delete forever. No one is there. To people wondering if I'll be also writing somewhere, yes, I'll be writing somewhere. And where will I be writing? I'll be writing on my notebook. It says they Mr. Second Semester CP. I don't have a very good taste of making notes, but I really like it. Computer programming. Sorry. I'm using Ubuntu, by the way. I downloaded it last night, and it's a very good operating system. It's a very dedicated operating system. It gives you freedom. It gives you really an insight into what's going on. So I will suggest people who are starting, not starting, but know basics of programming language to actually use Ubuntu. It's really good. I'll go from basics on my screen right now. See tutorial. Yeah. Code block. So for viewers who want to know, I'll put it on the chat as well. That what is the name of the software? It is Code 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 Block IDE. So I will also recommend people to use Ubuntu Linux as the operating system, or those people who use Ubuntu Linux to come on my video, because it's better. I'll keep on posting things. So this is the IDE. User download. It contains the GCC compiler. The important codes, I will definitely try to keep it here. If I can pin this message, it's the IDE. I'm using Ubuntu Linux. It's a very good in terms of that it is very specific to C. I had used Visual Studio Code a lot much, but I did not found it so valuable. The reason was very simple, because it is a bit distractive often, because you see so many stuff, colors, visual, which may be hard for you to comprehend at first. So I want a lighter version. Cool. I will not want to skip. I mean, yeah. How do we teach this video? इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के गान के चार डिब्बा देता है वेरिएबल उसमें ये चलते बैठ बहुत ही को आप लोग डेटा टाइप्स को समझने आप लोग कहेंगे क्या फाइल करते हैं लोड हो गया होता है ज्यादा होती है मेमोरी है इसमें एक जीरो I'm just going on a random video to see how do we also. What does it matter? Because
we also दिए need हुए to know हैं, now the ये how is एग्जांपल्स भी the आप लोग teacher जो है is going मद्देनजर to रखते हुए teach. अपनी सी प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये इस कोर्स को देखने के Cool, बाद done. आप लोग सी प्रोग्रामिंग के चैंपियन बन जाओगे। So as हाय we गाइस, discussed सी प्रोग्रामिंग की सीरीज में to आप लोग का become the बहुत बहुत champion in स्वागत this है। मैं हैरी इस कोर्स के दौरान आप लोग का इंस्ट्रक्टर रहूंगा। सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स का ये कोर्स यूट्यूब पे एकदम फ्री में रिलीज किया जाएगा। ये कोर्स उन सभी लोगों के लिए जो कि सी प्रोग्रामिंग जीरो से लेकर प्रो लेवल तक सीखना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आप लोगों ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्टार्ट ही की हो। ये कोर्स ऐसे लोगों के लिए भी है जिन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अभी रिसेंटली स्टार्ट की है और वो और एक्सप्लोर कर रहे हैं धीरे धीरे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है, किस तरह सीखी जाती है और वो अच्छे और एफिशिएंट प्रोग्राम्स किस तरह लिख सकते हैं। सी एक बहुत पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि सी प्रोग्रामिंग आप लोग को क्यों सीखनी चाहिए। ये आज के दौर में भी उतनी ही इंपॉर्टेंट क्यों है जितनी ये काफी पहले हुआ करती थी। और इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि आज के दौर में इसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। ऐसा क्यों है और क्यों आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए। इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न एरा में सी प्रोग्रामिंग करने के तरीके को सीखेंगे कि आजकल के दौर में किस तरह की टेक्निक्स को अपना के हमें सी प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए। जॉब मार्केट में सी प्रोग्रामिंग किस तरह इंपॉर्टेंट है, किस तरह हम लोग जॉब मार्केट को डोमिनेट कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग की, और ये कोर्स किस तरह बाकी कोर्सेज से अलग होने वाला है। ये सारी डिटेल्स मैं आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूं। गाइस, मैंने लर्न सी इन वन वीडियो बनाया जिसपे काउंटलेस नंबर ऑफ कमेंट्स आए आप लोगों के कि मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने बोला कि मुझे सी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और उस वीडियो को देख के उन लोगों ने बोला कि उनको सी में इंटरेस्ट आने लगा है। मैं उन सारे लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं और उन सारे लोगों की रिक्वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए आज ये कोर्स मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। मेरे सी इन वन वीडियो में काउंटलेस नंबर ऑफ कमेंट्स आए कि हरी भाई फुल ट्यूटोरियल चाहिए, फुल ट्यूटोरियल चाहिए, फुल ट्यूटोरियल चाहिए। तो आज फुल ट्यूटोरियल आ गया है और मैं इस ट्यूटोरियल में काफी पहले से काम कर रहा था और फाइनली इसका पहला वीडियो आज मैं रिलीज कर रहा हूं। गाइस, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि जितने भी सी प्रोग्रामिंग के कोर्सेज होते हैं ज्यादातर उनमें से काफी हाई प्राइस्ड होते हैं और उनको खरीदने के बाद आप लोगों को पता भी नहीं चलता है कि आपको समझ में भी एक्चुअल में आएगा या नहीं आएगा। ये सी प्रोग्रामिंग का कोर्स मैं इसीलिए आप लोगों के लिए लेके आया हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग सी प्रोग्रामिंग आजकल के दौर में अच्छी आईडीई के साथ और अच्छी प्रैक्टिसेस के साथ यूज कर पाए। मैं आपकी बातों से पूरा सहमत हूं कि किसी भी तरह का पेड कोर्स खरीदने से कोई गारंटी इस बात की नहीं रहती कि आप लोग को पे करने के बाद भी सी प्रोग्रामिंग समझ में आ ही जाएगी कि नहीं आएगी। मेरे इस फ्री इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए और मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएट करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो पे एक लाइक छोड़ दें। लाइक करने से मेरा मोटिवेशन काफी बढ़ता है। इस वीडियो में मैं आप लोग को ज्यादा थ्योरी बता के और अननेसेसरी डिटेल्स बता के बोर नहीं करूंगा। वो किताबी भाषा में आप लोग को नहीं बताऊंगा जो कि आप लोग सारी किताबों में देखते हैं। मैं इस कोर्स को यूनिक और Cool. So he said that C language is very important language for a person who is like beginning his journey in programming, because I think a lot of people who had been to college, C language had been their first language, if I'm not wrong. So it is a very basic language but important language, and there are people, not wrong, but offer paid courses, and they don't give a guarantee that if the paid course will go right or wrong. But yeah, anyone joining in the video? No, there's no one. अलग बनाना चाहता हूं, ऐसा बनाना चाहता हूं कि आप लोग उसको देखकर डायरेक्टली सिंपल टू द पॉइंट प्रोग्राम्स लिख पाएं और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा आप अपनी सी प्रोग्रामिंग की लेवल को कहां लेकर जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पार्ट में मैं आप लोगों को कोडिंग पे डायरेक्ट लेकर जाऊंगा, आप लोग को डायरेक्ट कोड लिखकर दिखाऊंगा कि किस तरह किसी चीज को अचीव किया जाता है। यहीं पर यही पॉइंट इस कोर्स को बाकी कोर्सेज से अलग बनाएगा। यहां मैं एक एक चीज को ब्रेक डाउन करूंगा। अगर आप लोगों ने मेरा कोई पहला कोर्स देखा होगा, जितने भी लोगों ने यहाँ पर मेरे कोई भी पुराना कोई कोर्स देखा होगा या मेरे कोर्स जो लोग देखते आ रहे हैं उन लोग को मालूम होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। गाइस, काफी दिनों से मैं कंटिन्यूअसली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था और उसका रीजन यही था कि मैं सी प्रोग्रामिंग की सीरीज पे काम कर रहा था। सी प्रोग्रामिंग के इस कोर्स को बनाने से पहले मैंने बहुत सारे टॉप लेवल के सी प्रोग्रामर्स के साथ डिस्कशंस किए, जिसमें कि आईआईटी के प्रोफेसर्स, इंडस्ट्री के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मैंने बात की और मैं उन सभी लोगों को इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले ही थैंक्स कहना चाहता हूँ। जितने भी लोगों ने मुझे अच्छा कंसल्टेशन
इंस्ट्रक्शन दिया इस कोर्स को बनाने से पहले, उनको इस कोर्स के पहले वीडियो में बहुत-बहुत धन्यवाद। सी प्रोग्रामिंग के इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए अभी के अभी आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दें। मैं सीरियसली ऑफिशियल स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाने वाला हूँ इस बार, और उस लिस्ट में आपका नाम इंक्लूड नहीं हो पाएगा अगर आपने कमेंट नहीं किया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप नीचे अभी के अभी, इससे पहले आप भूल जाएं, कमेंट कर दें अपना नाम, ताकि आप हमारे इस सी प्रोग्रामिंग के कोर्स का ऑफिशियली हिस्सा बन सकें। आज की तारीख में आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो आप लोग एक बात को जरूर इंश्योर करेंगे कि वो कम से कम 5 साल तक स्टेबल रहे और यूजेज स्टैट्स में कम से कम वो 5 साल तक अपनी पोजीशन टॉप में बनाकर रखे। अब सी प्रोग्रामिंग आप लोग को क्यों सीखनी चाहिए, जरा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कुछ ही सालों में सी प्रोग्रामिंग अब अपना 50वां जन्मदिन बनाएगी। ये अपना जन्मदिन प्रोलॉग और पीएलएम नामक लैंग्वेज, जिनका शायद आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, उनके साथ शेयर करेगी। सी प्रोग्रामिंग ने 50 सालों में इतना नाम कमाया और इतने प्रोग्रामर्स के दिलों में अपनी अपनी जगह बनाई कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, और पीएलएम और प्रोलॉग जैसी लैंग्वेजेस को काफी पीछे छोड़ दिया। सी प्रोग्रामिंग अगले 5 से 10 सालों में और पॉपुलैरिटी गेन करने वाली है, और इसकी पॉपुलैरिटी टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। और ये True. The video belonged from 2020. I'm in 2026. Still watching the video means author is saying something right. सब देखकर तो ऐसा लगता है कि फ्यूचर में सी प्रोग्रामिंग का स्कोप कभी खत्म ही नहीं होने वाला। हर साल के किसी भी तरह के डेवलपर सर्वे में सी प्रोग्रामिंग टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से हमेशा होती है। सी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर स्किल्स में से एक है, सबसे ज्यादा डिमांडेड स्किल। Cool. If you want to complete the complete playlist that contains 76 lecture, will not want to watch every single thing. I don't say we need to skip, but what we can do is we can simply 2x the video so we also do not miss something, but also uh, 4x, but 2x fine. Also don't overuse time. में से एक है, और अगर आप लोग को सी प्रोग्रामिंग आती है तो आपके हायर होने के चांसेस 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसकी वजह यह है कि सी फास्ट है, पॉपुलर है और इजी टू यूज है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सी काफी इजी टू यूज है। अगर आप कुछ कंस्ट्रक्ट्स को दिमाग में रखते हैं और उन कंस्ट्रक्ट्स को आप लोग इस्तेमाल करते हैं, अच्छा कोड लिखना सीखते हैं, सी काफी पावरफुल है। एक बार आप समझ जाते हैं कि किस तरह चीजें काम करती हैं। अब बात करते हैं कि सी इतनी फास्ट क्यों है। सी इतनी फास्ट इसलिए है क्योंकि सी में प्रोग्रामर के हाथ में काफी ज्यादा कंट्रोल होता है। प्रोग्रामर अपनी मेमोरी खुद मैनेज कर सकता है। प्रोग्रामर के हाथ में इतना कंट्रोल होता है कि अगर वो अच्छी तरह अपने लॉजिक को प्लान करे, अपने एल्गोरिथम को प्लान करे, तो मशीन लेवल कोड के ज्यादा से ज्यादा करीब पहुंच सकता है, जिसकी वजह से सी प्रोग्रामिंग में आप लोग फास्टेस्ट कोड लिख सकते हैं। हो सकता है कि आप अगर वही लॉजिक पाइथन में इंप्लीमेंट करें तो वो फास्ट ना हो, इसीलिए कभी भी आप लोग को स्पीड चाहिए होती है तो सी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कभी भी आप लोग को लेटेंसी कम से कम रखनी है तो सी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कभी भी कोई ऐसी चीज बनानी है जैसे कि गेम इंजन, जिसमें एक बटन दबाते ही आप लोग एक्शन एक्सपेक्ट करें, वहां पर Why C is fast? Why C is fast? I'll just write in the comment why C is fast. Why C is faster? Why? Because C is faster because it just like uh imagine that imagine that a message has to be transferred from to a Chinese person. The Chinese person understands Chinese, right? And but the Chinese person also understand French. So there is his French friend. The French friend speak only French but understand English. So if you want to convey a message to the Chinese man, the fastest ways of course is you directly speak in Chinese. But Chinese is harder, so we don't say, we use converter because the French person and the British man, they are the converter. So C language is like you're talking, you're just directly speaking to the French person by learning French, because you know that you speak to French, you speak the French to the French person, and the French person speak to Chinese. Quick. Python is like you talk with the British person, convey the message in English. The British person convey the message to then the French person, and then the French person conveys the message to the Chinese. So long time. So when you talk or go near directly to the machine talking, so you can just do the process faster. That is the reason.
प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर है और सी प्रोग्रामिंग जैसी लैंग्वेज ऐसे टाइम में एक मसीहा का काम करती है। अब बात कर लेते हैं कि सी किस किसने यूज किया और कौन यूज करता है, किस तरह की चीजें सी में लिखी गई हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा अगर आप लोग कुछ टाइम से प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे कि उबंटू हो गया, आपका रेड हैट हो गया, ये सारे लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन है। लाइनस टोरवाल्ड्स ने लिनक्स को बनाया था और उन्होंने मोस्ट ऑफ द पार्ट लिनक्स का सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि MySQL जैसा डेटाबेस ऑलमोस्ट सी में लिखा हुआ है पूरा। और MySQL डेटाबेस एक ऐसी चीज है जो कि सब लोग यूज करते हैं आज की तारीख में। बहुत सारे प्रोडक्शन डेटाबेसेस जो है, प्रोडक्शन सर्वर्स हैं, उनमें MySQL रन करता है। तो आप लोग समझ सकते हैं सी प्रोग्रामिंग कितनी ज्यादा पॉपुलर है। उसी के साथ साथ पाइथन का जो साइथन है, सी पाइथन, वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से लिखा गया। उसी के साथ साथ रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका भी मोस्ट ऑफ द पार्ट सी में लिखा गया है। इसी के साथ साथ जावा का जो पहला कंपाइलर था वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया था। और आप लोग को जानकर काफी ताज्जुब होगा, लेकिन जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें से मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो मैक हो, लिनक्स हो, विंडोज हो, मोस्ट ऑफ द पार्ट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखा गया है। इस सबका रीजन क्या है? इस सबका रीजन ये है कि सी इज द लोवेस्ट लेवल पोर्टेबल लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि सी एक ऐसी लोवेस्ट लेवल भाषा जिसमें आपके हाथ में इतना कंट्रोल रहता है कि आप मशीन कोड तक पहुंच सकते हो। सी से लो लेवल की बात अगर मैं करूं तो असेंबली लैंग्वेज है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में कोड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब अगर आप लोग ये बात नहीं समझे कि असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, सीपीयू इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, सीपीयू साइकिल्स क्या होती हैं, तो मैं आप लोगों से कहूंगा आप लोग थोड़ा सा वेट करें और सी प्रोग्रामिंग को सीखें। अपना फोकस पूरा प्रोग्राम्स बनाने में दें और इस पार्ट पे ज्यादा ना घुसें कि कंपाइलर कैसे काम करता है, कैसे सब चीजें होती हैं। मैं ये कहूंगा कि जब तक आप लोग एक बेसिक लेवल प्रोग्राम ना लिखने में सफल हो जाए तब तक आप इन सब चीजों में ना घुसें। और हाँ, ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है और हम लोग देखेंगे आने वाली वीडियोस में इन सब चीजों को भी थोड़ा बहुत टच करेंगे हम लोग। लेकिन मैं यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग में आप लोगों को चैंपियन बनाना चाहता हूँ इस ट्यूटोरियल सीरीज की सहायता से। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो लोवेस्ट लेवल पोर्टेबल लैंग्वेज है। ये Lowest level codable language. I can write machine language code. Machine assembly code is harder. So we prefer to write the C because C is very near understandable. They say it gives you so much control in your hand. All the operating system are written in the C language. Cool. It is going to be long live 24 hours. All the all yeah most of the operating system are written in C. ऐसी भाषा है जिसकी मदद से आप लोग सीपीयू इंस्ट्रक्शंस के सबसे ज्यादा नजदीक पहुंच सकते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा फास्ट रन करती है। ऑब्वियसली बात है। अब क्या होता है कि पाइथन जैसी भाषा में जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो थोड़ी सी इजी होती है। तो अगर सिंटेक्स बहुत ज्यादा आसान हो किसी लैंग्वेज का तो उसमें कॉम्प्रोमाइज लगता है स्पीड का। लेकिन सी में क्या है कि उसका सिंटेक्स भी आसान है कंपेयर टू की स्पीड जितनी वो प्रोवाइड करती है। और इसीलिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पाइथन जैसी लैंग्वेज की लाइब्रेरी जैसे कि numpy, scikit-learn, scipy, इन सारी लाइब्रेरीज को सी प्रोग्रामिंग में लिखा गया है और उसका पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन बनाया गया है। फिर पाइथन प्रोग्रामर्स उसको यूज करके सी प्रोग्रामिंग का कोड रन कर सकते हैं जिससे कि उनका कोड फास्ट रन करेगा। तो सी प्रोग्रामिंग का यूज दूसरी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करने में आज की तारीख में भी किया जाता है। तो अगर आप लोग जॉब की तलाश में हैं और जॉब मार्केट में सर्च कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर आप इस तरह की किसी कंपनी में जाती हैं जो इस तरह के काम कर रही है तो आप लोग को सी प्रोग्रामिंग आना मस्ट है। एक और बात मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जो सी प्रोग्रामिंग है वो सी प्लस प्लस सीखने के लिए स्टेपिंग स्टोन है। सी प्लस प्लस सीखने के लिए आप लोगों को अगर सी आती है तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है सी प्लस प्लस सीखने आपके लिए। मैं कहूंगा कि 60% जो है सी प्लस प्लस आपने सीख लिया, आप लोगों ने सी सीख ली और इवन उससे ज्यादा सीख लिया क्योंकि एक बार आपने सारे कंस्ट्रक्ट सीख लिए तो सिर्फ थोड़ा सा सिंटेक्स है जो आपको देखना है सी प्लस प्लस का और आप जो है रेडी है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग करने के लिए। अगर आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग सही से सीख लिया तो सी और सी प्लस प्लस जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में किया जाता है क्योंकि वहां पर टाइम का कंस्ट्रेंट होता है और आपका प्रोग्राम फास्टेस्ट तब रन करेगा जब आप लोग सी या सी प्लस प्लस जैसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। सीधी सी बात है। इसीलिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने इतनी बड़ी जगह बनाई हुई है डेवलपर कम्युनिटी में, जो भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं उन लोगों के दिलों में, और तो जो लोग कंपनीज में काम करते हैं जैसे गेम प्रोग्रामिंग कोई कर रहा है या फिर कोई scipy और ये scikit-learn और numpy सारी लाइब्रेरी लिख रहा है उन लोगों के लिए सी मसीहा जैसा काम करती है। सो गाइस 50 सालों से सी प्रोग्रामिंग ने प्रोग्रामर्स के दिलों में अपनी जगह बना के रखी हुई है और मैं आशा करूंगा कि इस कोर्स की मदद से मैं आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी तरह सिखा दूं। इस कोर्स को मैं बाकी जितने भी बोरिंग किताबी कोर्सेज होते हैं उनसे अलग रखने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। उसी के साथ साथ मैं इसको इंटरैक्टिव बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एक्सरसाइजेस, क्विज़ेस इस तरह की चीजें देता रहूंगा और आपके इनपुट्स के हिसाब से आपको फीडबैक देता रहूंगा और मैं उसके सॉल्यूशन बना के आप लोगों को शाउट आउट भी दूंगा। अगर आप लोगों में से किसी ने मेरा कोई पुराना कोर्स देखा तो आप लोगों को मालूम होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो आप लोग को मैं चाहूंगा कि आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लें और यहां से हम लोग अपना सी प्रोग्रामिंग का सफर स्टार्ट करेंगे। फिर आज के सारे डे टू डे यूज में आने वाले सॉफ्टवेयर जैसे कि कंपाइलर्स या फिर डेटाबेसेस या फिर वेब सर्वर्स, ये सारी चीजें जो सी प्रोग्रामिंग में लिखी हुई हैं इनका कोड आज भी सी प्रोग्रामिंग में जो लिखा हुआ है वो मेंटेन किया जाता है। तो सी प्रोग्रामर्स की डिमांड आज की तारीख में भी है। सी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां पर आप लोग परफॉर्मेंस को ज्यादा से ज्यादा स्क्वीज करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप लोग परफॉर्मेंस निकालना चाहते हैं अपने प्रोग्राम से कम एग्जीक्यूशन टाइम में और ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, और जहां पर आप लोग चाहते हैं कि मेमोरी वगैरह सारी चीजें आप कंट्रोल में रहे सब कुछ, वहां पर आप लोग सी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि हाफ ऑफ द वेब जो कि अपाचे और एनजीएनएक्स सर्वर द्वारा चलता है वो सी प्रोग्रामिंग में लिखे गए हैं। जी हां गाइस, अपाचे और एनजीएनएक्स का मोस्ट ऑफ द पार्ट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर आप लोग वेब एडमिन या किसी भी तरह वेबसाइट वगैरह की एडमिनिस्ट्रेशन में ना करते हैं तो आपको मालूम होगा अपाचे और एनजीएनएक्स क्या होते हैं। और अगर मैं भी आप लोगों को मालूम है तो मैं आपको बता देता हूं कि वेब सर्वर्स होते हैं जिनकी मदद से स्केलेबल वेबसाइट को सर्व किया जाता है। सो गाइस, चाहे जितनी भी लैंग्वेजेस मार्केट में आ जाए, चाहे वो पर्ल हो, पाइथन हो, रूबी हो, जावा हो, सी प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर्स के दिलों में अपनी जगह इसी तरह बना कर रखेगी और आज से 5-10 साल तक सी प्रोग्रामिंग की डिमांड आगे ही जाती रहेगी। गाइस, इस कोर्स को आज फ्री में लाने का मोटिव सबसे बड़ा यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसलिए मैं आज आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हुए आप अभी अपना फोन उठाकर व्हाट्सएप, फेसबुक जितने भी ग्रुप्स हैं सब में इसको शेयर कर डालिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनको फैला दिए। चाहे वो आपके स्कूल का प्रोग्रामिंग का ग्रुप हो, चाहे वो आपकी जॉब की टीम में लोगों का ग्रुप हो, सबको दिखा दीजिए यहाँ पर कि हिंदी में सी प्रोग्रामिंग का कोर्स स्टार्ट हो चुका है और मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें कोर्स। जिस तरह मैं लोगों तक इस कोर्स को पहुंचा रहा हूं उस तरह मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे इस इनिशिएटिव में सपोर्ट करें और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे। तो किसी भी सोशल मीडिया से आप लोग प्रोग्रामर से जुड़े हुए हैं तो उसमें इस वीडियो की प्लेलिस्ट को शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग के साथ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख पाएंगे और मैं आप लोग के लिए इस तरह के कोर्सेज और भी फ्री में लेकर आऊंगा। सी प्रोग्रामिंग इस कोर्स के बाद मैं प्लान करूंगा डेटा स्ट्रक्चर्स और जो एडवांस सी लेवल की चीजें होती हैं जैसे C++ होती है जो कि जाने स्टार्ट ने बनाई थी, सी को इंप्रूव करके हम लोग देखेंगे उसको भी एक दूसरे कोर्स में अगर इस कोर्स का रिस्पांस अच्छा रहा तो। सो गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आप लोग भी इस कोर्स को लेकर उतने एक्साइटेड जितना एक्साइटेड मैं हूं। हम यहां पर सी प्रोग्रामिंग के कोर्स में सीखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, पॉइंटर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, किस तरह एफिशिएंट प्रोग्राम लिखा जाता है, प्रोग्रामिंग का लॉजिक किस तरह बनाया जाता है, क्या आपकी मेंटल स्टेट होनी चाहिए कभी भी आप एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन को टैकल करें तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहता हूं। और जो पॉइंटर्स है ना, पॉइंटर्स ये इतनी गंदी तरीके से पढ़ाए जाते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूं, जो बुक्स मैंने पढ़ी है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ऑनलाइन मैंने मटेरियल देखा है, पॉइंटर्स को काफी ज्यादा कंफ्यूज करके बताया जाता है। मैं आप लोगों को एकदम एक बहुत अच्छी एनालॉजी के साथ समझाऊंगा और आप लोग कैसे बताऊंगा कि आप लोग भी कहेंगे कि यार ये तो इतनी आसान चीज थी, सिर्फ नाम सुनकर आप लोग को बताया जाता था। सो गाइस, वीडियो को शेयर कर देना, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।
पहला वीडियो हो चुका है, वीडियो 1 डन। We have to write this type of sentence 76 times. गाइस आज के इस वीडियो के थ्रू आप कोडिंग का मतलब और प्रोग्रामिंग करने की सही वजह को ढंग से Let me write something on my page. Video 1, what we studied. C is very near to assembly line, near to machine code and assembly line. That's why it is very fast. Used in competitive coding. Linux operating system, and most of the operating system are written on C. Okay, video 2. समझेंगे। गाइस इस वीडियो में जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, काश वो 5 से 6 साल पहले कोई मुझे बता देता तो यार मजा ही आ जाता। मेरी जो लाइफ है थोड़ी चेंज हो जाती, जिस हिसाब से मैंने प्रोग्रामिंग करना सीखी है वो थोड़ा बहुत तो चेंज हो ही जाता। गाइस आप कुछ भी करते हैं कंप्यूटर के थ्रू, आप सीक्वल में लिखते हैं, कोड पाइथन में लिखते हैं, किसी भी चीज में लिखते हैं। यहाँ ये ट्यूटोरियल सीखा है, लेकिन तब भी मैं आप लोगों से जनरली बात करता हूं कि किसी भी लैंग्वेज में अगर आप लोग कोई भी कोड लिखते हैं तो प्रोग्रामिंग क्यों की जाती है। क्या हम कंप्यूटर से ये नहीं कह सकते यार हेलो वर्ल्ड लिख दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो? हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं, ये मैं आज आप लोगों को बताता हूं। गाइस कोडिंग या प्रोग्रामिंग किसी भी भाषा में हो, वो हमारे और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन का एक जरिया होता है। वो एक जरिया होता है जिससे कि हम कंप्यूटर को बताते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। जैसे मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अभी हिंदी भाषा का उपयोग कर रहा हूं और आप लोगों को समझा रहा हूं कि सी लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, कोडिंग क्यों करते हैं। उसी तरह कंप्यूटर को बताने के लिए कि आप स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड लिखना चाहते हैं, या फिर आप लोग अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, या फिर आप लोग कोई मूवी देखना चाहते हैं। इस तरह के कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो I think today the easiest programming language is simply words. You can tell ChatGPT, write a program to display hello world. Now ChatGPT will convert this to its understandable language and then convert that to programming language, and then you copy the codes, you run the codes, then machine convert that code to C language level logics, and that C level logics convert that to basic binary codes, which are then executed by the CPU. बनाने के लिए आप लोग को एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको इंटरैक्ट करने के लिए कंप्यूटर से एक चीज का यूज करना पड़ता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है, एक माध्यम का यूज करना पड़ता है। यही माध्यम होती है कोडिंग, यही माध्यम होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिससे आप अपने सीपीयू को बताते हैं कि क्या करना है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं भी आप लोगों से हिंदी में बात कर रहा हूं, जैसे कि मैं आप लोगों को हिंदी में बता रहा हूं या फिर इंग्लिश में आप लोग किसी से बात करते हैं, उस तरह हम लोग जो है अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। उसी तरह कंप्यूटर से एक्जैक्टली आप लोग को उसी तरह से इंटरैक्शन करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करना पड़ता है। गाइस क्या ये वीडियोस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं? आप लोगों को वीडियोस थोड़े से भी अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के वीडियोस बनाता हूं, तो नीचे लाइक को अभी जल्दी से खटपट फटाफट हिट कर दीजिए। गाइस ये कंप्यूटर होता है वो बहुत ही डम मशीन होती है। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, कंप्यूटर एक बहुत ही डम मशीन होती है और उसको समझाने के लिए, उसके सीपीयू को समझाने के लिए, जिसको कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। CPU सीपीयू जो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है, वहां पर जाके इंस्ट्रक्शंस CPU एग्जीक्यूट brain होते of हैं। the तो सीपीयू computer होता है, उसको चाहिए वहां होती पे है execute एग्जैक्ट होते उसके हैं। द्वारा समझे जाने वाली भाषा कि क्या करना है। आप अगर उसको इंस्ट्रक्शन भेजेंगे कि इसको इसमें कॉपी कर दो, तो वो कॉपी कर देगा, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। उसको अपनी भाषा में एग्जैक्ट चाहिए होती है चीजें कि कैसे क्या करना है। और आप लोग हिंदी में अपने मुंह से बोलेंगे कि यार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, तो यार वो बिल्कुल नहीं समझेगा। यही होती है प्रॉब्लम कंप्यूटर की, इसीलिए मैंने कंप्यूटर को डम मशीन बोला। अनफॉर्चुनेटली ये भाषा जो कि सीपीयू समझता है, ये जीरोस और वन की भाषा होती है, ये हम लोग नहीं बोल सकते। अगर बोल भी सकते हैं तो बहुत मुश्किल होगी हम लोग को छोटे-छोटे काम करवाने से अपने कंप्यूटर में। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सिंपल है। इसके लिए आप लोग को एक लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऊपर जाना पड़ेगा। मैं आप लोगों को समझाता हूं मेरे कहने का मतलब क्या है। गाइस कोई भी एक कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसमें एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स होती है, यानी
यानी कि जो सीपीयू भाषा समझता है, कोई और चीज उसको फीड करती है वो भाषा और उस हिसाब से वो रिएक्ट करता है। ऐसी जो लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है वो आती है आपके माउस और कीबोर्ड में। आपने जैसे अपने कीबोर्ड का बटन दबाया, इंस्ट्रक्शंस को ट्रैवल करने में मदद करी और वहां से आपका जो इंस्ट्रक्शन था सीपीयू की भाषा में सीपीयू तक पहुंचा। इसी तरह कुछ भी प्रोग्राम आप लोग बनाते हैं तो आप लोग चाहते हैं कि आप सीपीयू को बताएं कि आप क्या करवाना चाहते हैं, कौन सा प्रोग्राम लॉन्च करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, किस फाइल को कहां कॉपी करना चाहते हैं। प्रोग्रामिंग में काफी एस्पेक्ट्स होते हैं और हम वो सारी की सारी चीजें ट्यूटोरियल सीरीज में सीखेंगे। बेसिकली आप बस अभी ये समझ लीजिए, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा कि जो कंप्यूटर होता है, जो सीपीयू होता है, वो डम मशीन है, उसकी भाषा को बनाने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं। यानी कि हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं वो कंपाइल होकर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, जिसको सीपीयू फाइनली समझता है। और अगर यही भाषा हम नेचुरल लैंग्वेज बोल के करें तो बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा सीपीयू के लिए इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना। अब मुझे मालूम है कि अभी आप लोग बिगिनर है, प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये सब चीजें आप लोगों को बताई थी। अभी कुल मिला के बात आपसे इतनी समझ लीजिए कि जो कंप्यूटर है उससे डायरेक्टली हम बात नहीं कर सकते। हम लोग इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उर्दू में उससे बात नहीं कर सकते। हम लोग को चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिससे हम उससे इंटरैक्ट कर पाए। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस तरह आप लोग को फ्रेंच, जर्मन इस तरह की भाषा सीखनी पड़ती है, उसी तरह ये भी भाषा आप लोग को सीखनी पड़ेगी। और ये कोर्स इसीलिए है, मैं आप लोग को ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स में बिल्कुल अच्छी तरह से समझाने वाला हूं। या फिर आप लोग कंफ्यूज मत हो, आप लोग ये मत समझना कि मैंने आप लोग को बोला कि कंप्यूटर नेचुरल लैंग्वेज नहीं समझता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जो वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं वो किस तरह काम करते हैं। सो ये वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं, वो अपने आप में प्रोग्राम होते हैं जिसको किसी ने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू लिखा होता है। जैसे कि सिरी है आपका और माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना है, आप कुछ भी बोलते हैं तो वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। तो जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है उसमें भी प्रोग्रामिंग चाहिए होती है। कोई भी टेक्नोलॉजी आज तक ऐसी नहीं बनी है कि आप लोग कुछ बोले और सीपीयू डायरेक्टली समझ के उसको इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर दे। जैसे कि आप लोग बोले मुझे एक वेबसाइट चाहिए जिसमें ये है, ऐसे कर दो, ये क्लिक कर दो, ये हो जाए, वो क्लिक कर दो, वो हो जाए और ऑटोमेटिकली 100% सटीक कोड जनरेट हो जाए। आज की तारीख में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। आप लोग को प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, एक ह्यूमन इंटरवेंशन हमेशा Is he right now? No, he's not true. What he said. करे तो वो हो जाए और ऑटोमेटिकली 100% उसको इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर दे। जैसे कि आप लोग बोले मुझे एक वेबसाइट चाहिए जिसमें ये है, ऐसे कर दो, ये क्लिक कर आज की in today's time, you can just tell a machine what do I want. I want a website that should have a certain type of header, certain type of footer, and title, pages. Cursor can do this. तो ये हो जाए, वो क्लिक करे तो वो हो जाए और ऑटोमेटिकली 100% सटीक कोड जनरेट हो जाए। आज की तारीख में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। आप लोग को प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, एक ह्यूमन इंटरवेंशन हमेशा रिक्वायर्ड रहेगा ही रहेगा। इसीलिए प्रोग्रामिंग डिमांड बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे नए नए सिस्टम्स आते जा रहे हैं मार्केट में, ऐसा नहीं कि प्रोग्रामिंग बढ़ती जा रही है। एआई, मशीन लर्निंग अभी उतने आगे तक नहीं पहुंची है कि आप लोग को रिप्लेस कर दे, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को रिप्लेस कर दे। और सी प्रोग्रामिंग जैसी लैंग्वेज की जो डिमांड जिस तरह बढ़ती जा रही है उस हिसाब से हम मार्केट में सी प्रोग्रामिंग की जॉब्स को इंक्रीज होता हुआ ही देखेंगे। गाइस, सी की हिस्ट्री का, सी के कांसेप्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अभी सी की हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आप लोग को यहाँ पर बताना चाहूंगा कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एटी&टी बेल लैब्स में डेनिस रिची ने बनाया था 1972 में। एटी&टी बेल लैब्स मतलब अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, जो कि यूएसए में लोकेटेड है। वहां पर डेनिस रिची ने सी प्रोग्रामिंग की स्थापना की थी। ऐसा नहीं कि सी प्रोग्रामिंग कोई पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्रोग्रामिंग से पहले भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई, जैसे कि बी, बीसीपीएल, लेकिन बात कुछ ऐसी थी सी के अंदर कि मजा आ गया लोगों को। बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, बिना किसी प्रमोशन के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के सी प्रोग्रामिंग ने इतनी तेजी से रफ्तार पकड़ी कि वो प्रोग्रामर्स की पहली चॉइस बन गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। यहाँ पर बात आती है, अगर मैं सी से पहले आने वाली भाषाओं की बात करूं तो उनमें से एल्गोल, बीसीपीएल, बी, फिर उसके बाद आई 1972 के अंदर ट्रेडिशनल सी, जहां पर डेनिस रिची ने पहला वर्जन बनाया सी का। और वहां पर लोगों को कुछ ऐसा मजा आ गया कि यार ये तो लैंग्वेज ऐसी है कि मतलब मजा ही आ गया। तो पहले जो प्रोग्रामिंग करते थे लोग और आज की तारीख में जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। आज की तारीख में हमारे पास आईडी होती है, हमारे पास फास्ट कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत अच्छी तरह हम लोग प्रोग्रामिंग कर पाते हैं। लेकिन पहले जमाने में जब लोग प्रोग्रामिंग करते थे तो उनके पास बहुत अच्छा एनवायरनमेंट नहीं हुआ करता था और ना ही उनके लिए प्रोग्रामिंग उतनी आसान होती थी जितनी आसान आज की तारीख में हम लोगों के लिए है। इसीलिए डेनिस रिची को एक जीनियस माना जाता है। डेनिस रिची सर अक्टूबर 12, 2011 में एक्सपायर हो गए। इंडीड उन्होंने प्रोग्रामिंग को एक नया शेप दिया और वो एक प्रोग्रामिंग जीनियस कहने के लायक है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेनिस रिची ने बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स को ऐड किया, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, पोर्टेबिलिटी, मिड लेवल, स्ट्रक्चर्ड और उसी के साथ साथ रिकर्शंस, पॉइंटर्स, ये सारी चीजों को उन्होंने इतना आसान बना दिया कि पुरानी लैंग्वेज को छोड़कर लोगों ने सी को स्टार्ट कर दिया। उसी के साथ सी मशीन इंडिपेंडेंट भी थी, यानी कि आप किसी मशीन के लिए उसको कंपाइल कर सकते हैं और उस मशीन में वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो मैं आप लोगों से इतना बताना चाहता था कि सी क्यों आई, सी को हमें क्यों बनाना पड़ा, सी को डेनिस रिची ने क्यों बनाया, सी की जरूरत क्या थी, लोगों ने सी को क्यों अपनाया। हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं जहां पर कोई पुरानी चीज जो कि अच्छी नहीं हो सकती थी उससे अच्छी किसी ने कोई चीज बना दी और सारे के सारे लोग वहां पर आ गए। मैं आप लोगों को एग्जांपल देना चाहूंगा। पहले ऑरकुट चला करता था, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, आज की तारीख में सारे के सारे लोग फेसबुक पे आ चुके हैं और ऑरकुट को फेसबुक ने पीछे छोड़ दिया। उसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे ब्राउजर गूगल क्रोम बेटर बना, लोगों ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को छोड़ दिया और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो आप लोग समझ जाइए क्यों लोगों ने सी को अपना लिया। एक रिलायबल, सिंपल और इजी टू यूज लैंग्वेज को लोग क्यों नहीं अपनाते। और आजकल की दुनिया में जिसमें की इंडस्ट्री में टूल और टेक्नोलॉजी दिन ब दिन आते रहते हैं और दिन ब दिन जाते रहते हैं, आज की तारीख में तो इतनी सारी कंपनियां डेली बेसिस पे बंद होती हैं और एक लैंग्वेज जिसने ऑलमोस्ट 50 साल अपने आप को कायम रखा और अभी अपना 50वां बर्थडे सी लैंग्वेज मनाने वाली है, वो लैंग्वेज को अच्छा होना ही होगा, तभी वो 50 साल तक लोगों द्वारा पसंद की गई। मैं अब एक मुद्दे पे बात करना चाहूंगा कि सी लोग कहते हैं कि ऑलरेडी सी को सी प्लस प्लस, सी हैश और जावा, पाइथन जैसी लैंग्वेज ने रिप्लेस कर दिया है, अब सी का कोई काम नहीं रहा, अब सी पीछे हो चुकी है। तो मैं इस डाउट को आप लोग के लिए अभी क्लियर कर देता हूं। देखो जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आज भी उतनी पावरफुल जितनी पहले हुआ करती थी, उसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोग कहेंगे कि सी प्लस प्लस ज्यादा बेटर है सी से, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सी प्लस प्लस सीखने के लिए आप लोग को सी के कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे और सी प्लस प्लस सी के थ्रू ही बनाई गई है, सी को ही आगे बढ़ाकर बनाई गई है, इसलिए उसका नाम सी प्लस प्लस दिया गया है और डी नहीं दिया गया है। तो जाने स्टॉक ने जो सी प्लस प्लस बनाई, उन्होंने सी प्लस प्लस को सी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स और भी कुछ नए फीचर्स देकर बनाई। तो अगर आप लोग ऐसा लगता है कि सी प्लस प्लस आप लोग ऐसे डायरेक्टली सीख लेंगे बिना सी को सीखे, तो मैं आप लोग को बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग सी को पहले सीखेंगे उसके बाद सी प्लस प्लस को सीखेंगे तब आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन पाएंगे। ये मैं बातें आप लोग को अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि सही तरीका ये है कि आप सी सीखें उसके बाद सी प्लस प्लस पे जाएं, क्योंकि सी में एकदम बेसिक्स हैं, उसके बाद सी प्लस प्लस में कुछ एडवांस स्टफ जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसी के साथ साथ इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, तो इन सारी चीजों को समझना मुश्किल हो जाएगा बिगिनर के लिए। इसलिए मैं कहूंगा बिगिनर सी को कंप्लीट करें और बिलीव मी, आप लोग सी पढ़ रहे हैं तो आप लोग अपने बेसिक फंडामेंटल्स को स्ट्रांग बना रहे हैं। एक बार आपको प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल समझ में आ गए उसके बाद कोई भी लैंग्वेज आप लोग कभी भी सीख सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक चीज है वो आप लोग को दिमाग में आनी चाहिए। उसके बाद आप कुछ भी सीखें, कैसे भी सीखें, एक बार आपको पता चलेगा कि कंप्यूटर किस तरह काम कर रहा है, सारी चीजें किस तरह काम कर रही हैं, वेरिएबल्स, फंक्शंस, कंडीशनल्स, ये सारी चीजें हर लैंग्वेज में ऑलमोस्ट सेम होती हैं। इसलिए मैं कहूंगा अपनी बुनियाद को आप लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखकर स्ट्रांग बनाएं। और मैं बार-बार पॉइंट आउट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सट्रीमली फास्ट है। अगर आप लोग को परफॉर्मेंस को ज्यादा से ज्यादा स्क्वीज करना है और ज्यादा से ज्यादा बेटर प्रोग्राम लिखने हैं
जो कि फास्ट रन करें और रिलायबल हो, तो आप लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए वीडियो गेम इंडस्ट्री में जहां पर आप लोग को स्पीड बहुत अच्छी चाहिए होती है और स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वहां पर सी का और सी प्लस प्लस का उपयोग किया जाता है। इस सी प्रोग्रामिंग के कोर्स को हम बहुत सिस्टमैटिक सीखेंगे। हम लोग बुनियाद से स्टार्ट करेंगे, हम लोग बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करेंगे जीरो से, उसके बाद धीरे धीरे चीजों को एडवांस करते जाएंगे। जैसे कि आप लोग कभी कोई भाषा सीखते हैं, सबसे पहले आप लोग उसके अल्फाबेट सीखते हैं और फिर उसके बाद आप लोग शब्द बनाना सीखते हैं, फिर आप लोग वाक्य बनाना सीखते हैं, सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं, उसके बाद आप लोग पैराग्राफ लिखना सीखते हैं, फिर आप लोग देखते हैं कि अच्छे पैराग्राफ किस तरह लिखे जाते हैं, जिसको हम लोग राइटिंग भी बोलते हैं, ऐसे राइटिंग और वो सब। उसी तरह प्रोग्रामिंग में सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि कौन-कौन से कीवर्ड्स होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, उसके बाद हम लोग कांस्टेंट्स, कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, इन सब चीजों की बात करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि किस तरह हम लोग इंस्ट्रक्शन को लिख सकते हैं, किस तरह हम लोग बता सकते हैं कंप्यूटर को कि क्या कब और कैसे करना है, और उसके बाद हम लोग फाइनली उसका प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं, यानी कि उसको कंपाइल करके एग्जीक्यूटेबल किस तरह बना सकते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अपनी प्रोग्रामिंग लॉजिक को किस तरह इंप्रूव करते हैं, जिस तरह मैंने आपको ऐसे राइटिंग बताया। यहाँ पर ऐसे राइटिंग होगी हमारी लॉजिक को इंप्रूव करना, चीजों को कम से कम टाइम में एग्जीक्यूट कराना, प्रोग्राम को रिलायबल बनाना, प्रोग्राम को ईजी टू मेंटेन बनाना। तो काफी सारे एस्पेक्ट्स हम लोग देखने वाले हैं इस कोर्स में, और ये सारी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सारी चीजें बिगिनर्स फ्रेंडली होने वाली है, किसी भी चीज पे मैं डायरेक्टली ऐसे जंप नहीं करूंगा। गाइस मैं प्लान कर रहा हूं इस तरह के कोर्सेज और भी बनाऊं, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, सी के बाद में सी प्लस प्लस और भी चीजें मैं बनाने की प्लान कर रहा हूं। अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं इस चैनल को, तो अभी के अभी नीचे शेयर कर दें इस प्लेलिस्ट को, इस वीडियो को अभी नीचे शेयर मार दीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। इससे क्या होगा कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह के और भी कोर्सेज लेकर आ पाऊंगा। सो गाइस मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। गाइस अगला वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उसमें हम लोग अपना पहला प्रोग्राम बनाएंगे, और अपना पहला प्रोग्राम बनाने के साथ साथ हम लोग समझेंगे कि किस तरह एक आईडी को इंस्टॉल कर सकते हैं हम अपने कंप्यूटर के अंदर। और नहीं, मैं आप लोगों को पुरानी आईडी, टर्बो सी और वो सब फालतू चीजें नहीं बताऊंगा। मैं आप लोगों को तैयार करूंगा आने वाले 5 से 10 साल के लिए। मैं आप लोगों को 5 से 10 साल बाद आने वाली जॉब मार्केट के लिए तैयार करूंगा। मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा आप लोगों को मॉडर्न कंपाइलर्स, आईडीईज और टेक्निक्स का इस्तेमाल करना मैं सिखाऊंगा। ये कोर्स पूरा मॉडर्न अप्रोच के साथ पढ़ाया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी के अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए अगर आप लोगों ने नहीं दबाया, क्योंकि यार इस तरह के कोर्सेज वीडियो जो एजुकेशन चैनल से वो गुम जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस चैनल को खोएं और इस कोर्स को छोड़ के जाएं। इसलिए नीचे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप लोग भी इस चैनल के एक प्राउड मेंबर बन पाएं और ये चैनल आपका अपना हो पाए। सो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में जो भी मैंने आप लोगों को बताया सही से आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्या समझ में आई चीजें आप लोग को, और आप लोग कितने एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं आप लोग कमेंट पढ़ने के लिए या बैठा हूं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Video 2 is also completed. What we learned on video 2? We learned, what do we learn in video 2? To learn C++, you still need C. So if somebody know C++, no. If somebody knows C language, they already know 60% of C++. So the demand for C will never go down. Trust me. I can say with confidence that if you are learning C, the demand will never go down. C was made in Bell Labs. Bell Labs was the company which made C language, and AT&T was the bigger organization under which Bell Lab was operating. That इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग मॉडर्न सी कंपाइलर और टूल्स को इस्तेमाल करना सीख जाओगे। maybe आप लोग he'll अपना सेकंड लेवल be बढ़ा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस saying वीडियो में about VS Code. I'm not going to use जैसे कि मैंने VS आपको आईडी और Code. कंपाइलर के बीच में डिफरेंस बताया कि आईडी होती है वो आप लोग को जो कोड है उसको अच्छी तरह से इंस्टॉल कर लिया होगा। चला लीजिए, ये प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग को लिंक में दे दूंगा। वरना ये छोटा सा है, आप लोग को सिर्फ मेन लिख के एंटर मारना है और ये लाइन ऐड करनी है। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। इस वीडियो में आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा सी प्रोग्राम कैसे दिखता है। इस वीडियो से आप लोग अपना सी प्रोग्रामिंग का कोर्स स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा।
सो गाइस अपनी स्क्रीन पर आप लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं जो कि हमने पिछले वीडियो में रन किया था। गाइस इस प्रोग्राम को हम लोगों ने समझा नहीं था, हमने सिंपली इसको रन कर दिया था और हम लोगों ने इसका आउटपुट देखा था जो कि हमको कंसोल पे दिखा था। लेकिन ये प्रोग्राम एक्चुअली करता क्या है और ये किस तरह काम करता है, ये सारी टेक्निकलिटीज में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं एकदम सिंपल लेमन टर्म्स में। गारंटी देता हूं आप लोगों को कि इस वीडियो के अंदर आप लोग समझ पाएंगे कि प्रोग्राम क्या होता है, क्यों होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी क्या होता है, सब चीजें आप लोग को एकदम एंड टू एंड बताता हूं। सो गाइस हमारा कोई भी एक प्रोग्राम होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें होता है हमारे प्री प्रोसेसर कमांड्स, फंक्शंस, वेरिएबल्स, स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशंस और कमेंट्स। ये चीजें हमारे सी प्रोग्राम में आप लोग को देखने को मिलेंगी। सबसे पहले मैं इस पहली लाइन की बात करना चाहूंगा जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर यहां पर देख रहे हैं, #include stdio.h। ये एक प्री प्रोसेसर कमांड है, यानी कि ये प्री प्रोसेसिंग के टाइम पर हमारा कंपाइलर्स को डील करेगा, यानी कि #include कर दो stdio.h। इस बात का मतलब क्या हुआ, ये लाइन सिंपली कंपाइलर को बताती है कि हम लोग को stdio.h नाम की एक फाइल चाहिए इस प्रोग्राम में, तो हमको वीडियो 4 में in video 4 there is a in starting of your program you write a code that goes forward by the set of letters hashtag include studio stdio.h. It simply tells the computer that give me the stdio file. वो फाइल लाकर दो और हम इस प्रोग्राम में लगाएंगे उस फाइल को, उसके बाद इस प्रोग्राम का कुछ हो पाएगा, यानी कि We will add this to our program and then something will happen. stdio.h के कंटेंट्स की जरूरत है, उसको इस फाइल में इंक्लूड कर दो। We need content from stdio.h. Add this into our program so that we can continue our उसको इस code. प्रोग्राम के साथ इंक्लूड कर दो। उसके बाद जो आप लोग इंट मेन देख रहे हैं ये एक फंक्शन होता है। अब आप कहेंगे कि ये फंक्शन क्या होती है, नया वर्ड में कहां से ले आया। अभी Int main is a function. ठीक है, आप लोग ये समझ लीजिए कि एक प्रोग्राम को टुकड़ों में तोड़ने के लिए बहुत ही रफली मैं आप लोगों को बता रहा हूं फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। एक प्रोग्राम को टुकड़ों में तोड़ देते We use to break a program into pieces. We use something called as function. हैं और एक जो हमारा रूटीन होता है वो एक तरह का काम करता है, उसको फंक्शन बोलते हैं। तो हमारा नंबर ऐड करने का एक फंक्शन होगा, नंबर मल्टीप्लाई करने का एक फंक्शन हम लोग लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग अपने प्रोग्राम को टुकड़ों में तोड़ते हैं। फिर से इंट मेन जो होता है वो एक स्पेशल तरह का फंक्शन होता है क्योंकि वहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। वहां Int main is a special type of function because from there the execution of the program continues. से प्रोग्राम चालू होता है। हमारा प्रोग्राम शुरू होगा, इंट मेन के अंदर घुसेगा, फिर वहां से जो कॉल्स आएंगी फंक्शन Our program will start from int main and then whatever will happen will continue. की वहां पर जाएगा। फंक्शन को डिटेल में मैं आप लोग को आने वाली वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ आप लोग को इतना समझाना चाहता हूं कि जो इंट मेन लिखा हुआ है इसमें मेन है फंक्शन का नाम, मेन फंक्शन का नाम Main is the name of the function. और ये हमेशा मेन ही रहता है। सी प्रोग्रामिंग में जहां आपने It is always main. It's not a random function because we have studied you can make different type of functions. It's not just one of those functions. Yes, there are functions, but it's just not one of the function. It is always main. मेन लिख के एक ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस लगा दिया, इसका मतलब ये है कि यहां से मेरा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। लेकिन अब आप लोग कहेंगे इंट क्या है? ये इंट वो इंटीजर है जो कि फंक्शन रिटर्न करेगा। हर एक फंक्शन की एक रिटर्न वैल्यू होती है, यानी कि Int is that integer that return a value. So every function return some value. So it आप जब उस return फंक्शन को कॉल करते integer. हैं तो वो आपको बदले में कुछ देता है। अब ये जो फंक्शन होता है मेन, ये दूसरे फंक्शन को कॉल करता है और वो फंक्शन इसको रिटर्न में कुछ देते हैं और उस वैल्यू को ये इस्तेमाल कर। एग्जांपल आप लोग को देता हूं, अगर मान लो मैं ऐड ए बी लिखूं, यानी कि दो नंबर को ऐड कर दो ए और बी को, तो उसमें से ये ए और बी को ऐड करके जो भी नंबर आएगा उसको रिटर्न में दे देगा मेन को। अब आप से कहेंगे कि ये जो मेन फंक्शन है ये इंट क्यों रिटर्न कर रहा है, इसकी रिटर्न वैल्यू इंट क्यों है? तो इसकी रिटर्न वैल्यू इंट ये है क्योंकि ये भी एक नंबर रिटर्न करता है, किसको? उसको जिसको इसने कॉल किया, यानी कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को। ये डिटेल्स में आप लोग को आगे और अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए जो मेन फंक्शन होता है वो Okay, so main function also returns a value in integer. Basically, the one of our function is main. Main is the first function, and it returns value in integer. It receive value in integer. इंट रिटर्न करेगा और ये जो इंट रिटर्न करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा। इसके बाद प्रिंटफ एक अलग फंक्शन है जो कि हम यूज कर रहे हैं, stdio.h हेडर फाइल। Printf is another function that which is
which we get from the stdio.h, and it is to tell a machine that print my number, print a letter, print a text. से हमने इसको इंक्लूड इसी को यूज करने के लिए किया था और इसको इस्तेमाल करके हम लोग कंसोल पे प्रिंट करते हैं डिजायर्ड आउटपुट यानी कि हेलो वर्ड जो कि हमने इनपुट पे दिया एज एन स्ट्रिंग। और इसके बाद लास्ट वाली लाइन यानी कि रिटर्न जीरो, जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया, ये रिटर्न में देगा एक इंटीजर ऑपरेटिंग सिस्टम को, और जीरो का मतलब होता है कि सब कुछ ठीक ठाक चला, तो ये रिटर्न में जीरो दे देगा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर सी प्रोग्राम का। मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को ये बेसिक स्ट्रक्चर समझाना चाहता हूं एक प्रोग्राम लिखकर, लेकिन हम आगे अभी और एक्सप्लोर करेंगे इस कोर्स में वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, जितनी भी चीजें। लेकिन अभी हम एक चीज अज्यूम करते हैं, सिनेरियो आप लोग को अज्यूम करवाता हूं। मान लीजिए कि आप लोग को एक असाइनमेंट बनाना है स्कूल में और उसकी डेडलाइन कल की है, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोगों के पास टाइम तो है नहीं, तो आप लोग कुछ भी करके उसको कंप्लीट करोगे और उसके बाद आप कहोगे यार मैं कोर्स तो सीख लूंगा लेकिन मुझे अभी इस असाइनमेंट को पूरा करना है। कुछ ऐसा ही दिमाग में रख के हम इस प्रोग्राम को लिखेंगे और उसके बाद हम पूरे कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलो चलते हैं मेरे कंप्यूटर के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड आईडी में हम ये प्रोग्राम लिखेंगे और समझेंगे एक एक टुकड़ा प्रोग्राम का कि क्या चीज किस तरह काम करती है। Now, Harry is saying that we'll write a program into our IDE, which is code block right now, and let's see what type of program he want to say. Again, he tell that printf is a type of function. Printf is a type of function which is used to write something in the command line, in the control line, and whatever we write inside the inverted commas is printed as it is to the command line. बस यहाँ मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था प्लस में क्लिक जैसे मैं करूँगा वहाँ पर मैं एक नई फाइल बना पाऊंगा। मैंने add.c नाम की एक नई फाइल बना लिया है। अब मैं यहाँ पर मेन लिखूंगा, जैसे कि मेरा जो विजुअल स्टूडियो कोड का इंटेलिजेंस है वो मुझे कुछ पॉपअप दे रहा है यहाँ पर मेन, और मैं इस पर क्लिक करूंगा और मुझे स्निपेट मिल गया। मैं यहाँ पर लिखूंगा int a, b। अब आप लोग ये मत पूछना मुझसे int a और int b क्या होता है, कि आने वाले वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ, सब कुछ आपको समझाऊंगा। अभी हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं एक बेयर मिनिमम प्रोग्राम लिखने का। प्लस में आप लोग यहाँ पर प्रिंटफ लिख दीजिए और यहाँ पर लिखिए एंटर नंबर a, और उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगा दीजिए, और उसके साथ साथ आप कंट्रोल डी दबाएंगे अपने कीबोर्ड पे तो ये रेप्लिकेट हो जाती है, शॉर्टकट होता है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो आप लोग जो है इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग का नहीं चल रहा है और आप लोग ने शॉर्टकट नहीं कर पा रहे फॉर सम रीजन, मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर नहीं हो पाता तो आप लोग उसको कॉपी भी कर सकते हैं। इसके बाद एक scanf नाम का फंक्शन यूज करेंगे और मैं यहाँ पर इंक्लूड करूंगा #include stdio.h, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में की थी। मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा इसको और मैं यहाँ पर लिखूंगा scanf, उसके बाद मैं लिखूंगा %d, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा ampersand a, और उसके बाद b के लिए मैं लिखूंगा ampersand b। अब आप कहेंगे ampersand क्या है, ये scanf क्या है, मैं आपको बता देता हूँ फिर से। मैं सिर्फ यहाँ पर बेयर मिनिमम प्रोग्राम लिख रहा हूँ। हमारा यहाँ पर टारगेट सिर्फ ये है कि हमें प्रोग्राम लिखते चलता हुआ। अभी आप लोग को समझ नहीं है उसको क्या है, कि आने वाले वीडियो में मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ। For viewers to know what is happening, so we are writing a program. We are writing a program, and that program is simply addition of two numbers a and b. A and b get some numerical value from the input user, and then we add the two values, right? वो एक चीज क्या है और एकदम ब्रेक डाउन करके ऐसा समझाऊंगा कि आप चाहकर भी नहीं भूल पाओगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया था, जो हैश इंक्लूड stdio.h वो एक प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट है। उसके बाद ये जो इंट मेन है ये हमारा मेन फंक्शन होता है, और ये मेन फंक्शन जो होता है हमारा यहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, यहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। इंट a b का मतलब मैंने दो इंटीजर को डिफाइन कर दिया। प्रिंटफ का मतलब है कि प्रिंट कर दो ये जो भी लिखा हुआ है, लिटरली ऐसे का ऐसे कंसोल पे प्रिंट कर दो। scanf एक फंक्शन होता है stdio.h में जो कि हमें मदद करता है a की वैल्यू को यूजर से लेने के लिए, यानी कि मैं जो भी कीबोर्ड से एंटर करूंगा वो a में आ जाएगा। एम्परसेंड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है। मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा इसको, ये सिर्फ हम एक बेयर मिनिमम प्रोग्राम लिख रहे हैं। अब ये मत सोचना कि मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, शिकायत मत करना, क्योंकि एम्परसेंड a होता है एड्रेस ऑफ a, और एड्रेस ऑफ a में स्टोर हो जाएगी वैल्यू जो भी यूजर कीबोर्ड में इनपुट करेगा। सिमिलरली यहाँ पर प्रिंटफ और scanf चलेंगे, और रिटर्न जीरो से रिटर्न मैंने करी है जीरो जो कि इंट है। ये चीज जो लिखी हुई है यहाँ पर इंट, और ये जो वैल्यू मैं रिटर्न कर रहा हूँ जीरो, ये दोनों मैच करनी चाहिए। अगर ये मैच नहीं हो रही है तो इशू हो जाएगा। तो रिटर्न जीरो होता है हमारा, रिटर्न करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को जीरो वैल्यू। इसका मतलब ये होता है जीरो जब हम रिटर्न करते हैं उसका मतलब होता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छी तरह चल गया, सब कुछ सक्सेसफुल रहा। तो आगे बढ़ते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर लिखूंगा gcc add.c, और gcc add.c लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एंटर मारूंगा। मेरा ये Let me write this program. Video 1, I write this include stdio.h int main. In main printf hello world return 0. We'll go to okay, what have hello world. We don't need stdlib.h studio library. We'll remove that, and int main is a function. Int, the function output is an integer. Inside the main we okay, so he removed that thing. So he declared two variable a and b. He declared two variable a and b. He declared two variable a and b, a comma b. Never forget to write a semicolon. Then he wrote printf enter number. Enter number a. Enter number a. And
Then scanf print is used to project something text data to the command line, and scanf is in that command line to receive some value from the user. Scanf scanf is like for if you want to take an integer, so you say machine, I want to take an integer for integer, and you use the inverted commas. Within you write, someone would want to take an integer, some another person would like to take an float. Anything can happen. I want to take an integer, I will write percent %d. You tell machine that give me an integer, you write then and to save from the address of, I think if we need to write a, so you say machine give me a number from the address of the variable a. So like store this number in a variable. Then I write printf, again printf. This time I say the machine enter number b, enter number b, enter number b, enter number a, enter number b. And then again I do scanf %d, comma. This time we want to store the value in b. Always never forget to write the in semicolon after the ending of the statement. प्रोग्राम कंपाइल होके ए इसको कंपाइल करते हैं तो सिंपली मैं लिखूंगा जीसीसी add. We write the current code. If we simply run the command, use F5, F9, yes, hello world. But why? Did I, because did you saved it? No. Now, if I now run, I want to run it again. How do I run it? People say do F9 and it don't seem to be running it. It seems pause. Why? Is there a problem? Int main int a comma b integer printf enter number scanf enter number b return 0. As I think there is no problem. It's running debug in video 3. Why? I'm on video 2 now. Run video 2. What is happening? Didn't I save this thing? I saved it. Run, buddy. Why? If I delete this, why? I mean, tell me what the nothing happening. Okay, bell message. Debugger search result code block. You are here, and I don't know, but I want to run the programming language, right? How do I do this?
I don't get option. Okay, something bad happened. Hmm. F9. It says hello world for video 3. Why? Why is it compiling video 3? Why not video 2? If I'm on video 2, okay. No, I have a thought. What if I delete this file? No, I think if I delete this file, it won't happen. This thing quit. Video 1 cancel. Hmm. Now there's nothing here in video 3. This is simply use this for. Now if I run this bill, yes, no, okay, video 3. Let me check. Yeah, नहीं work किया ना. It need to take my input. I'm frustrating. Wow, what the fuck? Why this is happening? What is happening? Why what is happening? Why are there so many parameters? Hmm. Do we need to start fresh? Because it seems it is not working at all. Why we don't know it? We really want it to work. Yes. Let me again try to run it.
Chalo, now it's working. Good. 56. Process returned 0. Execution time was 8.532 seconds. Presented to cancel. I don't know how it works. सी और जीसीसी add.c लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा एंटर मारूंगा, मेरा ये प्रोग्राम कंपाइल होकर a.exe बनाएगा। इसी के साथ साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर मान लो आप a.exe ना देखकर मान लो harry.exe देखना चाहते हो तो आप एक -o लिखकर हैरी लिखो यहाँ पर, तो ये harry.exe बनाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो। और उसके बाद ./ha लिख के जैसे टैब दबाओगे या आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो। मैंने यहाँ पर डॉट स्लैश लिखकर हैरी ha लिखा और टैब दबाया तो ये ऑटो कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको मैनुअली टाइप कर सकते हो ./harry.exe और एंटर मारोगे तो क्या है एंटर नंबर ए, मान लो मैंने 4 दिया और उसके बाद मैंने 5 दिया। अब यहाँ पर मैंने जो है ऐड किया नंबर, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ ऐड भी कर देता हूँ नंबर को और यहाँ पर एक काम और करूंगा /n लगाऊंगा। /n होता है न्यू लाइन कैरेक्टर। मैं फिर से बताता हूँ /n न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। इस बार जो ए से ही चिपक के 4 आ रहा है, अगली बार नई लाइन में आएगा। तो मैं इसके बाद यहाँ पर एक printf लगाऊंगा और printf के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा योर एडेड नंबर इज योर \n. सम इज, द सम इज अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। We asked the user for 2 numbers. He gave us 2 numbers, then we write the summation of the 2 numbers. दिस सम इज %d और उसके बाद कॉमा लगा के मैं यहाँ पर a + b लिख देता हूँ। कंट्रोल एस को You have to, where you want the thing, you write %d. If it is an integer, you write %d. If it is a float, you write, don't write %d, you write a %f. %f. I mean %f because I have %d. I want to do my thing here. %d. First is a \n, after that \n. Then you write thing a plus b. ये करता हूँ। अब मुझे वापस से कंपाइल करने की जरूरत पड़ेगी। आई रिपीट, मुझे वापस से इसको कंपाइल 6, 9. The sum of a and b is 9. 5. Did we wrote something? Okay. What is this? Need to do this. Yes. So our number is added. Want to do it again? This time give our machine so much big number to calculate. So very big number. And our machine can it add? Sum of a and b is -2. Interesting. Why? So if I gave in integer I gave so big number, in b I give so big number, it added, it give -2. Wow. की जरूरत पड़ी क्योंकि मैंने प्रोग्राम को मॉडिफाई कर दिया है।
तो मैं इसको कंपाइल करूंगा और इस बार अपनी हैरी डॉट टीएक्सटी को खोलूंगा, नंबर में 6 डालूंगा, नंबर में 5 डालूंगा और आप लोग देखो ये मुझे बता रहा है कि सम इज 11। अब आप ये मत समझना मैंने इतनी जल्दी जल्दी आप लोग को बता दिया और आप लोग को समझाया नहीं। मैं सिर्फ आप लोग को एक सिचुएशन में डालना चाहता था कि अगर आप लोग को एकदम से प्रोग्राम लिखना पड़ गया तो कैसे लिखोगे, और इस प्रोग्राम का मैं आपको स्ट्रक्चर समझाना चाहता था कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सी प्रोग्राम का। इस वीडियो का मकसद सिर्फ उतना ही है। तो अगर आप लोग को ये समझ में आ गया कि क्या चीज क्या है, जैसे कि प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट है, ये एक फंक्शन है, ये एक वेरिएबल डिक्लेरेशन है, सिर्फ इतना ही समझ में आ गया आप लोग को तो काफी है अभी के लिए। गाइस इस कोर्स को कंप्लीट और इंटरेस्टिंग रखने के लिए मैं आप लोग को बताऊंगा कि बेसिक सी प्रोग्राम किस तरह काम करता है। बेसिक सी प्रोग्राम का कंपाइलेशन जब होता है तो क्या क्या होता है बिहाइंड द सीन्स, इसको हम लोग जल्दी से यहाँ पर समझते हैं। सो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आपको भी कोई ऐसा इंजीनियर नहीं बनना जो कि कल कंपाइलर लिखने वाला है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा इजी लीजिएगा और सुनते रहिएगा, जितना समझ पाए उसको ग्रास्प कीजिएगा। और बिल्कुल भी मस्त नहीं है कि आप लोग एक टेक्निकलिटी को समझे जो मैं बताने वाला हूं, और मैं बस आप लोग को इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूं और इस कोर्स के कंप्लीटनेस के लिए बता रहा हूं कि कंपाइलर किस तरह काम करता है, लिंकर किस तरह काम करता है और वो क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो कि कंपाइलर को लेने पड़ते हैं एक प्रोग्राम के कंपाइलेशन को कंप्लीट करने के लिए। गाइस एक सी प्रोग्राम को एक्जीक्यूटेबल में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलेशन को ये स्टेप्स लेने पड़ते हैं। प्री प्रोसेसिंग, फिर होता है हमारा कंपाइलेशन, फिर उसके बाद होती है असेंबली और उसके बाद होती है लिंकिंग। ये प्रोसेस मैं आप लोग को यहां पर इलस्ट्रेट करके दिखाना चाहता हूं। मैं फिर से रिपीट करूंगा अपनी बात को कि अगर आप लोग को कोई भी चीज यहां पर समझ में नहीं आती है, दैट्स टोटली ओके। अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आप प्रोग्राम लिखने पे फोकस करिए। ये जो चीज मैं आप लोग को बता रहा हूं सिर्फ आपका इंटरेस्ट रेज करने के लिए बता रहा हूं। ये हैरी डॉट टीएक्सटी को मैं शिफ्ट डिलीट कर दूंगा, उसी के साथ साथ ए डॉट टीएक्सटी को भी शिफ्ट डिलीट दबा के मैं डिलीट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपने टर्मिनल को क्लियर करूंगा। आप लोग विंडोज में क्लियर लिख के अपने टर्मिनल को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद मैं लिखूंगा जीसीसी -vol -save temps। आप लोग मैं क्या लिख रहा हूं, ये सिंपली फ्लैग्स है जीसीसी के, आप इसको एज इट इज लिख दो और उसके बाद मैं मेन डॉट सी से आप लोग को इसको डेमोंस्ट्रेट करूंगा। ऐड डॉट सी से नहीं करूंगा, मेन डॉट सी जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा और उसके बाद माइनस ओ लिख के यहाँ पर हैरी लिख दूंगा कि मैं हैरी डॉट टीएक्सटी एज एन एक्जीक्यूटेबल दिखना चाहता हूं। एंटर में जैसे मारूंगा आप लोग देखिए कुछ बंच ऑफ फाइल्स यहाँ पर बन चुकी हैं। एक तो मेन डॉट एस है, एक मेन डॉट ओ है, एक मेन डॉट आई है और अपनी जो हैरी डॉट टीएक्सटी है वो भी बन गई है। अब मैं इन चारों प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को। प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलेशन, असेंबली और लिंकिंग, ये चारों प्रोसेस क्या है। पहला स्टेप है प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग में सिंपली हमारे प्रोग्राम के कमेंट्स को रिमूव किया जाता है, मैक्रोस को एक्सपेंड किया जाता है, जितनी भी हैश इंक्लूड वाली फाइल्स हैं उनके कंटेंट को उठाकर एक फाइल में सेव कर दिया जाता है, उठाकर यहाँ पर लाके लिटरली वो चिपका देता है। मैंने आप लोगों को कमेंट्स नहीं बताया क्या होता है। कमेंट सिंपली हमारे यहाँ पर इस तरह मैं लिख दूं हैरी इज अ गुड बॉय तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। कमेंट सिंपली प्रोग्रामर को मदद करते हैं कुछ भी इंफॉर्मेशन डालने के लिए। मान लो अपडेट डालना चाहते हो, ऑथर का नाम डालना चाहते हो और आप चाहते हो कि वो चीज एग्जीक्यूट ना हो तो आप लोग कमेंट लगाकर उसको लिख सकते हो। मैं कमेंट्स वाले आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, तो अभी आप टेंशन मत लेना। तो प्री प्रोसेसिंग में कमेंट्स रिमूव होते हैं, मैक्रोस एक्सपेंड होते हैं और जितने भी हैश इंक्लूड वाले स्टेटमेंट्स होते हैं वो रिजॉल्व होते हैं। और ये प्री प्रोसेस्ड आउटपुट होता है वो डॉट आई फाइल में स्टोर होता है। मैं आप लोगों को डॉट आई फाइल खोल के दिखाता हूं। ये लिटरली इसने क्या किया कि हैश इंक्लूड stdio डॉट h का कंटेंट उठाया, सब कुछ इसने मैक्रोस वगैरह को एक्सपेंड करने के बाद आपका प्रोग्राम डॉट आई फाइल में यहाँ पर लिख दिया। आप लोग देखेंगे तो मैंने लिखा ही नहीं था, ये सिंपली इसने stdio डॉट h का कंटेंट को उठा के रखा है। अगर आप लोगों ने और भी फाइल्स इंक्लूड की होती तो यहाँ पर आप लोगों को कंटेंट देखने को मिलता। साथ साथ आप लोग देखिए आपने जो लिखा था वो यहाँ पर आ गया था, इतना साफ से लिखा था, बाकी जो इंक्लूड हुआ है वो उसके ऊपर है। तो डॉट आई फाइल में प्री प्रोसेस्ड आउटपुट होता है, यानी कि स्टेप 1 का आउटपुट। कंपाइलिंग प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट किया जाता है इस डॉट आई फाइल को और वो फाइल सेव होती है डॉट एस एक्सटेंशन के साथ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो डॉट एस फाइल है ये असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शंस है। ये इंस्ट्रक्शंस मैं आप लोग को नहीं कहूंगा कि आप लोग समझे, बस मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि ये असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शंस में आपके द्वारा लिखे गए प्रोग्राम को कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये थी हमारी दूसरी प्रोसेस कंपाइलेशन। अब हम बात करेंगे असेंबली की। अब ये जो हमारी डॉट एस फाइल है जिसमें असेंबली लैंग्वेज लिखी हुई है, हम लोग इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस में, यानी लिटरली उन इंस्ट्रक्शंस में जो कि हमारा सीपीयू समझने वाला है। तो आप लोग अगर इस डॉट फाइल को खोलें तो आप लोग देख सकते हैं, आप इसको नहीं खोल पा रहे क्योंकि बाइनरी फाइल से ये मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस है। तो ये हमारी प्रोसेस होती है असेंबली। अब हम बात करते हैं फाइनल फेज की जिसका नाम होता है लिंकिंग। जो लिंकर होता है वो सारी की सारी डॉट ओ फाइल्स को सिलकर एक एक्जीक्यूटेबल बना देता है, जो कि इस केस में हैरी डॉट टीएक्सटी है, ताकि आप लोग जितनी भी अलग अलग फाइल्स में अलग अलग फंक्शंस वगैरह लिखे हुए हैं उनको कंबाइन करके एक जगह रन कर सको। लिंकिंग भी हमारे पास दो तरह की होती है, स्टैटिक लिंकिंग, डायनामिक लिंकिंग। जैसे कि डॉट डीएलएल फाइल्स होती है हमारी विंडोज के अंदर, डायनामिक लिंकिंग होती है। अब ये सब चीजें जो है वो मैं आप लोगों को किसी दूसरी वीडियो में कवर करके बता दूंगा, लेकिन अभी हम लोग बेसिक सी पर फोकस करेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और अब आप लोग जब अपने सी प्रोग्राम्स लिखेंगे तो आपके दिमाग में कम से कम रहेगा, एक रफ आइडिया रहेगा कि यार चल क्या रहा है जब आप लोग यहाँ पर जीसीसी मेन डॉट सी लिखते हैं और डॉट स्लैश ए डॉट टीएक्सटी या फिर डॉट स्लैश हैरी डॉट टीएक्सटी लिखते हैं। सो गाइस मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, बेसिक स्ट्रक्चर सी प्रोग्राम का समझ में आएगा और आप लोग को समझ में आया होगा। Basically, he said that you have this option where you don't have this option. When you write a program in C, first pre-processing happen, then it convert into machine language and then binary language. 3. कि किस तरह कंपाइलेशन होता है, किस तरह क्या क्या स्टेप्स लेता है कंपाइलर हमारा आप लोग की एक्जीक्यूटेबल को बनाने के लिए। तो मैंने बिहाइंड द सीन्स आप लोगों को दिखाई इसलिए ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे इस कोर्स में और आप लोग यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग को एक्चुअली करने से पहले समझे कि क्या क्या होता है बिहाइंड द सीन्स, कंपाइलर क्या क्या स्टेप्स लेता है और क्या क्या करना पड़ता है कंपाइलर को आपकी वो डॉट एक्सी फाइल या फिर आप लोग लिनक्स वगैरह में तो उसकी एक्जीक्यूटेबल फाइल बनाने में। गाइस आप में से कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप लोग मेरी किस तरह मदद कर सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग वहां पर शेयर कर दीजिए तो मुझे काफी हेल्प मिलेगी। मैं चाहता हूं ये कोर्स ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रामर्स तक पहुंचे। तो अगर आपका स्कूल का या फिर कॉलेज का कोई ग्रुप है, फिर आप लोग जॉब करते हैं वो ग्रुप है, तो आप लोग ये वीडियो को वहां पर शेयर करके चला दीजिए, मेरी बहुत ज्यादा हेल्प होगी और मैं लोगों को सी प्रोग्रामिंग आसानी से सिखाने में सफल होऊंगा और आप लोगों के लिए इस तरह के और भी एडवांस कोर्सेज आगे लेकर आऊंगा। सो एज सेड अब आप लोगों को मालूम है कि लिंकिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, सी किस तरह काम करती है, कंपाइलेशन किस तरह होता है, सारी चीजें मैंने आप लोगों को एकदम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझा दी। आप लोगों को कोई भी स्टेप में कोई इशू आ रहा है तो मैं आप लोग से कहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पीछे करके वापस से एक बार दोबारा देखें। मैं रिकमेंड करूंगा हाईली कि सब लोग इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें। पहली बार में आप लोग को थोड़ा समझ में आएगा और उसके बाद दूसरी बार में एकदम क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसी के साथ साथ मैं कहूंगा आप लोग इस कोर्स के दौरान नोट्स भी लें क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग नोट्स लेके नहीं रखेंगे इस कोर्स में तो क्या होगा कि आप लोग मान लीजिए 5 6 7 8 महीने बाद आप लोग भूल जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये कोर्स तो कहीं जा नहीं रहा है, इसलिए आप लोग उठाएं कॉपी को और कॉपी में लिखते जाएं वो पॉइंट्स जो आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट है, जो आपको लगता है कि आप लोग भूल सकते हैं उन पॉइंट्स को आप लोग जरूर से लिखें। सो इस वीडियो में आशा करता हूं आप सभी ने लाइक कर दिया होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।
मैं सी प्रोग्राम को काफी लोग बनाते हैं, लेकिन आज इस वीडियो को जो भी पूरा देखेगा वो अपने सी प्रोग्राम को नजदीक से अच्छे से समझ पाएगा एंड एज अ रिजल्ट लॉजिक को अच्छी तरह से बना पाएगा। वीडियो को मिस मत करना। सो गाइस, अभी तक हम लोगों ने जो भी सी प्रोग्रामिंग के बारे में As a usual habit, $72 to go. सीखा हुआ, या तो हिस्ट्री थी, इंस्टॉलेशन था, या फिर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें थी, लेकिन आज से हम स्टार्ट करेंगे वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि सी प्रोग्राम को बनाते हैं। तो सी प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने कुछ टेक्स्ट लिखा। अब वो जो टेक्स्ट था उसमें क्या चीज क्या थी उस बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। मैं आप लोगों को वापस लेकर जाऊंगा अपने विजुअल स्टूडियो कोड आईडी में, और वहां ले जाकर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो प्रोग्राम हम लोगों ने लिखा था उसमें क्या चीज का मतलब क्या था। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आप लोगों को समझ में आएगा कि सी प्रोग्राम में क्या चीज क्यों लिखी जाती है। सो गाइस, एक सी प्रोग्राम कॉन्स्टेंट्स, आइडेंटिफायर्स, स्ट्रिंग लेटर्स, कीवर्ड्स और सिंबल से मिलकर बना होता है। हम लोग इन चीजों को नजदीकी से देखेंगे इस वीडियो में कि क्या चीज क्या होती है, और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब बनी थी और इवॉल्व हुई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो ये सब जो चीजें हैं वो इस तरह क्यों बनाई गई। सो मैं सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा टोकन्स की। अब सी में जो प्रोग्राम होता है हमारा वो एक इंडिविजुअल टोकन से मिलकर बना होता है। अगर मैं प्रिंट हेलो वर्ड को टोकन्स में तोड़ना चाहूं तो मेरा प्रोग्राम कुछ ऐसा दिखेगा जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशन को अच्छा करने के लिए हम लोग इस प्रोग्राम को कुछ इस तरह लिखते हैं, यानी कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, न्यू लाइन को स्किप कर देते हैं। हर स्टेटमेंट का टर्मिनेशन सी प्रोग्रामिंग में सेमीकोलन के द्वारा होता है। जैसे आप लोगों ने जोक्स तो काफी सुने होंगे कि सेमीकोलन भूल गया, सेमीकोलन जो है सबसे बड़ा चोर है, सेमीकोलन प्रोग्रामर का दिमाग खराब करके रखा हुआ है। सो गाइस, सेमीकोलन कुछ नहीं है, एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर ये सेमीकोलन आप लोगों ने नहीं लगाया, आपको आपका प्रोग्राम एरर देगा, आपका कंपाइलर आपको बताएगा भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। कंपाइलर अपने हाथ खड़े कर देगा और आपको बोलेगा कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल नहीं कर सकता, मैं इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूटेबल नहीं बना सकता, मैं आपके इस कोड का सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि क्या लिखा हुआ है, सिर्फ एक सेमीकोलन के मिस होने की वजह से। सो गाइस, मैं आप लोगों को लेकर चाहूंगा अपने विजुअल स्टूडियो कोड आईडी के अंदर, वहां मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो हमने प्रोग्राम लिखा था उसमें क्या चीज क्या होती है, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स थे उस प्रोग्राम के वो क्या थे। सो गाइस, यहां मैं आ गया अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अब जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं उसको बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनना, और जैसे जैसे मैं कर रहा हूं आप लोग वैसे वैसे देखना। एक बात और आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोगों को इस कोर्स के बाद वन पेजर पीडीएफ यानी कि एक पेज की पीडीएफ चाहिए समरी के तौर पे, या फिर क्या आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को नोट्स सप्लाई करना स्टार्ट कर दूं इन वीडियोस के साथ। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप लोगों ने कहा कि हां हमें चाहिए नोट्स, हां हमें चाहिए वन पेजर पीडीएफ इस कोर्स के बाद, तो जरूर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। इसलिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना चाहिए कि नहीं चाहिए। सब लोग जरूर बताना, नहीं चाहिए तब भी बताना और चाहिए तब भी बताना। आगे बताएं, जैसे आप लोग देख रहे हैं मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हूं। यहां पर मैं अपना वो पुराना प्रोग्राम खोलूंगा जो कि मैंने खोला हुआ था। आप लोग यहां पे देख सकते हैं जैसे कि मेरी स्क्रीन पर की बेसिक स्ट्रक्चर मैंने पिछले वीडियो में समझाया था सी प्रोग्राम का। अब हम लोग देखेंगे इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि जो टुकड़े हैं, जैसे कि इंट क्या है, इसके बाद ये जो कर्ली ब्रेस है वो क्या है, मेन तो मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन ये जो मेन शब्द है वो क्या है, उसको क्या कहते हैं, वो सब चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। गाइस, एक सी प्रोग्राम टोकन्स की मदद से बना होता है। जब मैं टोकन्स की बात करता हूं तो उसका मतलब होता है सी प्रोग्राम को बनाने वाले वो टुकड़े जो कि सी प्रोग्राम को बना रहे हैं, उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे कि हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा था अपने पिछले वीडियो में जिसमें कि हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते थे स्क्रीन पे, इसको इंडिविजुअल टोकन्स पर मैं तोड़ूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि मैंने प्रिंटफ को अलग कर दिया, ये सिंबल अलग कर दिया, मैंने ये स्ट्रिंग लेटर अलग कर दिया, फिर उसके बाद सेमीकोलन और ये मैंने अलग कर दिया। मैं इसको जैसे भी कर सकता था तब भी ये जो है जैसे एक्सपेक्टेड था वैसे रन करेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड से प्रिंट कर दिया है। तो मैंने क्या किया, इसको इंडिविजुअल टोकन्स में तोड़ दिया। तो एक टोकन या तो कीवर्ड होगा, या आइडेंटिफायर होगा, या कांस्टेंट होगा, या स्ट्रिंग लेटर होगा, या सिंबल होगा। कीवर्ड क्या होता है, सबसे पहले मैं कीवर्ड की बात करता हूं। कीवर्ड रिजर्व वर्ड्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर 32 जनरल
पर्पस कीवर्ड होते हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। तो ये कीवर्ड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, जनरल पर्पस कीवर्ड्स होते हैं और ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं, यानी कि इन वर्ड्स का आप कांस्टेंट नहीं बना सकते, कोई भी आइडेंटिफायर नहीं बना सकते, वेरिएबल नहीं बना सकते। ये कीवर्ड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिजर्व करके रखे हुए हैं। जैसे कि आप लोग रिटर्न को देख रहे हैं, ये कीवर्ड है, इंट को देख रहे हैं, ये कीवर्ड है, कैर में लिखता हूं तो वही कीवर्ड है। तो ये जो रिजर्व वर्ड्स हैं वो आप लोग नहीं कर सकते इस्तेमाल अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी आइडेंटिफायर को बनाने में, किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल का नाम बनाने में। इसी के साथ बात करते हैं कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। देखो, आइडेंटिफायर्स हमारे किसी भी वेरिएबल का नाम हो सकता है, किसी भी फंक्शन का नाम हो सकता है, जिससे कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। दैट्स इट, आइडेंटिफायर की जो थ्योरी है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो नहीं बनाना चाहता। सिंपल सी चीज़ है, कोई भी नाम जो कि आप किसी वेरिएबल या फंक्शन को देना चाहते हो, जैसे कि आपकी मम्मी आपको रोहन, शुभम या फिर विक्रांत जो भी आपको नाम है उससे पुकारती हैं, उसी तरह हम लोग अपने फंक्शन को, वेरिएबल को और भी हम जो एंटिटीज बनाएंगे जैसे कांस्टेंट्स वगैरह, उसको हम पुकारते हैं आइडेंटिफायर से। अब आइडेंटिफायर में कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड और उसके साथ अंडरस्कोर और लेटर्स और नंबर्स भी हो सकते हैं। तो सी क्या अलाउ करता है वेरिएबल्स के नाम में, ये हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। बस आप लोग ये ध्यान रखना कि सी पंक्चुएशन कैरेक्टर्स को अलाउ नहीं करता है, @ डॉलर, परसेंट, ये आइडेंटिफायर्स के तौर पे अलाउड नहीं होता है। उसी के साथ साथ आप लोग को बताना चाहूंगा जो सी है वो केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि अगर मैं किसी वेरिएबल का नाम रख देता हूं कैपिटल एच और उसके बाद एक दूसरे वेरिएबल का नाम मैं स्मॉल करता हूं तो वो दोनों अलग-अलग माने जाएंगे। इसके बाद हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने यूज़ किया एक सेमीकोलन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पहले, सेमीकोलन स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब मैंने इसको इंडिविजुअल टोकन में तोड़ दिया, लेकिन हम लोग जो है इसको एक लाइन को कॉम्पैक्ट बना के रखते हैं, हम अपने प्रोग्राम को रीडेबल बना के रखते हैं और हम इसको मैनुअली अपने दिमाग के अंदर समझते हैं कि कौन से टोकन क्या है और हम लोग इसको कॉम्पैक्ट करके एक लाइन को, यानी कि सेमीकोलन तक की जो लाइन है उसको हम लोग एक सिंगल लाइन रखते हैं। यानी कि जो मैंने व्हाइट स्पेसेस और न्यू लाइन्स एक्स्ट्रा ऐड की हैं वो सब मैंने भी हटा दी हैं। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मेरा प्रोग्राम जो है वो रीडेबल हो जाए। उसी के साथ-साथ हमारे प्रोग्राम में कुछ कांस्टेंट जैसे कि 0 है, ये कांस्टेंट है। हम आने वाले टाइम में कांस्टेंट कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। वेरिएबल कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है ये भी बताऊंगा। उसी के साथ-साथ ये जो हेलो वर्ड था ये स्ट्रिंग लिटरल था, यानी कि एक स्ट्रिंग थी और मैंने जैसे इस पे होवर किया, आप लोग ये कह रहा है कैर और उसके बाद इसमें बता रहा है 13 इसकी साइज है और उसी के साथ ये मुझे दिखा रहा है कि क्या वैल्यू है। ये किस तरह क्या है इसको हम आगे समझेंगे। आप लोग वन थिंग एट अ टाइम समझिए। उसके बाद हमारे सिंबल्स आते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्कैनफ और उसके बाद मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ %d, फिर उसके बाद मैं %a लिखता हूँ, मान लो %, मेरा एक सिंबल हो गया। तो ये सारे के सारे सिंबल्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम बना होता है कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, लिटरल और सिंबल से मिलकर। आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, लिटरल और सिंबल। उसी के साथ साथ आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं सी के 32 जनरल पर्पस रिजर्व कीवर्ड्स को। तो भी वो मैं आप लोग के लिए अभी स्क्रीन पर लेकर आ गया।
लोग को पता होना चाहिए कि कौन-कौन से वो कीवर्ड्स हैं जो कि सी प्रोग्रामिंग में रिजर्व्ड है। अपने पिछले प्रोग्राम में मैंने कुछ टेम्परेरी फाइल्स बनाई थी जो कि मैंने आप लोगों को ये दिखाने के लिए बनाई थी कि सी प्रोग्राम कैसे काम करता है। मैं उन सबको भी यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैं वो सब नहीं रखना चाहता यहाँ पर। उसी के साथ मैं EXE भी डिलीट कर देता हूँ अपनी। वापस से हम प्रोग्राम को कंपाइल करके और उसको रन कर लेंगे। एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा वो ये कि आप लोग अपने प्रोग्राम में व्हाइट स्पेसेस कितनी भी डाल सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपको व्हाइट स्पेस डाल देता हूँ अपने टोकन्स के बीच में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। उसी के साथ अगर मैं यहाँ पे 10 पेज डाल दूँ और यहाँ पर भी मान लो मैं कोई 10 पेज डाल दूं और उसके बाद इसको रन करूं तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा और एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट कर दिया। एक विजुअल स्टूडियो कोड का फीचर आप लोग को बताता हूं। मान लो मैं main.c और add.c दोनों साइड बाय साइड खोलना चाहता हूं, तो आप लोग ये जो बटन है इसको जो हमारा ये स्प्लिट एडिटर वाला बटन है इसको आप यूज कर सकते हैं और इससे आपकी स्क्रीन जो है दो में स्प्लिट हो जाएगी। तो ये आपका इंडिपेंडेंटली चलेगा, इसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं आराम से और ये आपका इंडिपेंडेंटली चलेगा यहाँ पर और आप जो है इन दोनों के कोड को डिबग कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या चीज कहां थी मेरे किस कोड में। तो आप लोग यहाँ पर जो है मल्टीपल एडिटर्स खोल सकते हैं एक ही विंडो में। तभी मैं कहता हूं कि आईडी का इस्तेमाल करना चाहिए। आईडी जो है बहुत ही काम की चीज होती है। अभी मैं अपने प्रोग्राम को नॉर्मल स्टेट में ले आऊंगा। एक चीज मेंशन करना चाहता हूं कि कम से कम एक व्हाइट स्पेस कैरेक्टर होना चाहिए टोकन के बीच में। जैसे अगर मैं यहाँ पर रिटर्न 0 ऐसे लिख दूं तो हमारा जो प्रोग्राम वो समझ नहीं पाएगा, रिटर्न अलग है और 0 अलग है, इसलिए वो एरर थ्रो करेगा। मैं आपको दिखाता हूं, देखो इसने एरर थ्रो कर दिया। तो कम से कम एक व्हाइट स्पेस होना चाहिए रिटर्न और उसमें जो वैल्यू रिटर्न होगी उसके बीच में, ताकि हमारा प्रोग्राम कम से कम ये तो आइडेंटिफाई कर पाए कि ये रिटर्न 0 एक है, फिर रिटर्न और 0 रिटर्न 0 अलग-अलग है। तो ये सारी चीजें आप लोग को प्रैक्टिस करते करते और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। लेकिन मैं आशा करता हूं कि अभी जो बेसिक आईडिया है और ये जो हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं सी प्रोग्राम के वो आप लोग भी समझते होंगे। आने वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वहां पे मैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के बारे में बताऊंगा और डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा। वहां से मेन सी स्टार्ट होने वाली है। तो इसी को मिस मत करना आने वाली वीडियोस। इसलिए आप अभी इस प्लेलिस्ट को सेव कर रख लीजिए, कहीं पर बुकमार्क कर लीजिए या फिर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। जैसे भी आप रखना चाहते हैं इसको संभाल के आप रख लीजिए ताकि कोर्स गुमे ना। डिस्क्रिप्शन में मैंने कोर्स का लिंक दिया हुआ है पूरा, वहां से आप लोग कोर्स को उठा सकते हैं। सो गाइस आशा ये करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया इस वीडियो में सब कुछ। आप लोग को मजा आएगा इस ट्यूटोरियल के कोर्स में। मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता देना कि कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो। उसी के साथ साथ फ्यूचर में मैं आप लोगों के लिए नोट्स या वन पेज पीडीएफ लेकर आऊंगा, तो आप लोगों को मैं तभी दे पाऊंगा अगर आप लोगों ने नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट किया हुआ है। क्योंकि अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट नहीं किया हुआ है तो मैं आप तक कैसे पहुंच पाऊंगा मेरे नोट्स और जो वन पेज पीडीएफ बनाऊंगा। उसके लिए मैं जरूर एक वीडियो निकालूंगा, उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं आ पाएगी। इसलिए आप लोग वन पेज पीडीएफ और मेरे नोट्स को मिस कर देंगे। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया और आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह की और क्वालिटी वीडियोस बनाऊं तो नीचे आप लोग शेयर बटन दबा के इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि यही तरीका है जिससे वीडियोस और लोगों तक पहुंचेंगे और एज अ रिजल्ट मैं और वीडियोस आप लोग के लिए इस तरह की लेकर आ पाऊंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से दे दिया होगा। सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगले वीडियो जो आने वाले हैं उसमें हम लोग बेसिक प्राइस स्टार्ट करेंगे। आप लोग एक्सरसाइजेस दूंगा, क्विज़ेस दूंगा, आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करूंगा और तो ये कोर्स को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूं। इसलिए मिलता हूं मैं आप लोगों से आने वाले वीडियोस में। बस इस वीडियो में थम्स अप जरूर दे देना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। I don't know if a lot many people have joined this live stream. It is going to be very much valuable. Now I am doing for video 5 is done. 71 left. Video 5 is done. As I'm also making notes this time, I will read out what I have noted. Video 5. C language is compiled, mean converted to pre-processing machine code, binary code. In C, every line ends with a semicolon. There are tokens, meaning C programs can be broken into various tokens. Tokens are like basic building blocks.
Token is breaking a program into its pieces with elements. Keywords. There are 32 reserved keywords which you can't take as variable name like int float. Identifiers can be name of any variable. It's any name which you can give to any variable. C. Don't allow punctuation to be named as identifiers. C is a case sensitive programming language, so you can name a variable cat or capital CAT, and both variable will be different. You can store different information in both the variables. Our program is made up of keywords, identifiers, constants, string, and symbol. Symbol and percentage, inverted commas, slash, and all these are symbols. Identifiers like cat equal to 5. So cat is a variable constant. Madhav equal to 2 is a constant. Keywords, int, main, printf, scanf, all these are uh, reserved keyword. But print, scanf are not. Their main. Here are 32 reserved keywords in C: auto, break, case, char, const, continue, default, do, double, else, enum, extern, float, for, goto, int, if, int, long, register, ratum, sort, signed, size of, static, struct, switch, typedef, union, unsigned, void, volatile, while. So these are 32 reserved keywords, meaning you can't keep them as your variable name or constants. You can add as many white spaces to your program. It won't matter, and as many new line, not like Python where format also matter. There's need to be minimum one white space must be there between keyword, like return 0. You can't just like return 0. You have to be return space 0 or return space 0. In next videos, we'll be studying about variable, constant, and data type. Variable, constant, data type. Before then, we just studied basic structures like what are identifiers, keywords, token, reserved keywords, and how C language is broken into various forms like pre-processing machine code, binary codes, right? Basic stuff. In video 4, we saw things like we always called something called stdio.h before writing a function, like we're calling a library, come here, and now you'll be the reference to all those programs. The machine can look from here. Before that, we just saw benefits of C. Have I right? Video 5 is done. इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा कि वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट क्यों है और डेटा टाइप्स क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स हम लोग क्या करते हैं और ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है ये वीडियो बहुत ज्यादा ज्ञान से भरा होने वाला है इसलिए कभी भी इस वीडियो को गलती से भी आप लोग मिस मत कर देना। जिस तरह से एक डब्बा होता है और उस डब्बे के अंदर आप लोग सामान भर देते हैं और उसी के साथ आप उस डब्बे के अंदर सिर्फ उतना ही सामान भर सकते हैं जितनी उसकी कैपेसिटी है, उसी तरह जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल भी हमारे पास एक डब्बा होता है, खाना होता है, जहां पर हम लोग मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करेंगे। अब जैसे कि मान लो मैं आपको एक डिब्बा देता हूं, वो दाल रखने का डिब्बा है, तो आप लोग उसमें दाल डालेंगे, पानी नहीं डालेंगे। उसी के साथ अगर मैं
कोई बड़ी बोतल देता हूं तो उसमें आप लोग क्या डालेंगे, उसमें आप लोग पानी डालेंगे, पानी डाल के स्टोर करेंगे और उसमें आप लोग जो है दाल कभी स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि वो डिजाइन की गई है पानी होल्ड करने के लिए। उसी के साथ साथ जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं सी में उनका भी टाइप होता है। जो डेटा टाइप होता है वो ये बताता है कि इसमें किस तरह का वेरिएबल आने वाला है। समझ रहे हैं ना अपनी बात को मैं क्या कह रहा हूं? वो ये बताते हैं कि इसमें किस तरह का वेरिएबल आने वाला है। अगर दाल की कटोरी है तो उसमें दाल आएगी और अगर पानी की बोतल है तो उसमें पानी ही आएगा, कुछ और नहीं आ सकता। सी प्रोग्रामिंग में हमारे पास चार, फ्लोट, इन, डबल बहुत तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। सबको एक करके ब्रेक डाउन करने वाला हूं इस वीडियो में और ये वीडियो पूरा जरूर देखना। और इस वीडियो के साथ अगर मैं कभी भी कोई भी पीडीएफ चीट शीट वगैरह रिलीज करूंगा तो मैं आप लोगों को दे पाऊं, से नीचे कमेंट कर देना आई वांट द चीट शीट, ताकि मैं आप लोगों को चीट शीट दे पाऊं। जैसे तैयार हो जाए मैं आप लोगों को कमेंट रिप्लाई कर दूंगा। तो वापस हम वेरिएबल, तो वेरिएबल जो होता है एक नाम होता है जो कि हम स्टोरेज एरिया को देते हैं कि भाई यहां पर हम स्टोर करने वाले हैं ये चीज। जैसे कि इंट वेरिएबल हुआ, उसमें इंटीजर स्टोर करूंगा। क्या वेरिएबल उसमें कैरेक्टर स्टोर कर दूंगा। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को प्रोग्राम के थ्रू बताता हूं, वो आप लोगों को ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो एक काम करते हैं, चलते हैं अपनी विजुअल स्टूडियो को आईडी के अंदर और आईडी के अंदर प्रोग्राम लिख के इस चीज को समझते हैं। आराम से बैठ के आप लोग आराम से पानी वानी पी लीजिए, चाय वाय पी लीजिए और आराम से मेरी बातों को सुनिए बहुत ही ध्यान से, क्योंकि ये वो बातें हैं जो कि मैंने बहुत ही मुश्किल से सीखी हैं और यहाँ पर मैं आप लोग को बहुत ही आसानी से सब बातें सिखाने के लिए आया हूं। इसलिए ध्यान से अच्छे से मेरी बात को आप लोग सुनना। सो गाइस, आज के इस वीडियो का टॉपिक है वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स इन सी। और वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स को समझने से पहले मैं आप लोग को यहाँ पर बताना चाहता हूँ फ्लो क्या रहता है हमारे सी प्रोग्राम का एक बार और। आप लोग कहेंगे एक बार और मैं आप लोग को क्यों बता रहा हूँ। Flow of C program, pre-processing, compilation, assembly, linking, loading. उसका रीजन ये है कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या कि वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स को समझेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले जब आप सी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो होती है हमारी प्री प्रोसेसिंग। अब प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है? प्री प्रोसेसिंग में सिंपली कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं, जैसे कि कमेंट्स का रिमूव होना हो गया, और उसी के साथ-साथ 2-4 और चीजें जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता ही दी थी, वो होता है। उसके बाद हमारा मेन कंपाइलेशन होता है, उसके बाद असेंबली होती है और उसके बाद एक बार असेंबलर ऑब्जेक्ट्स में क्रिएट कर देता है आपके प्रोग्राम को, उसके बाद लिंकिंग होती है और उसके बाद जो आपका प्रोग्राम है वो रैम में लोड होता है। अब रैम क्या होता है? रैम में सबसे पहले आपका प्रोग्राम आके लोड होता है, जो आपकी रैम होती है। इसमें क्रिएट कर देता है आपके प्रोग्राम को, उसके बाद लिंकिंग होती है और उसके बाद जो आपका प्रोग्राम है वो रैम में लोड होता है। अब रैम क्या होता है? रैम में सबसे पहले आपका प्रोग्राम आके लोड होता है, जो आपकी रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसमें आके आपका प्रोग्राम लोड होता है और उसके बाद वहां से चलता है। तो आपकी रैम, जब मैं मेमोरी यहाँ पे बोलूंगा उसका मतलब होगा रैम, तो आपकी रैम यहाँ पर मेमोरी का काम करती है। तो मेमोरी को आप कभी हार्ड डिस्क से कंफ्यूज मत होना। मेमोरी का मतलब यहाँ पर रैम हो। जब मैं बोलूंगा कि प्रोग्राम मेमोरी में लोड हो गया है, इसका मतलब होगा कि प्रोग्राम रैम में आके लोड हो गया। होता है ना 4 जीबी की रैम होती है, 8 जीबी की रैम होती है, तो वो रैम वही होती है।
है। तो रैम जितनी ज़्यादा होती है उतने प्रोग्राम्स आप लोग खोल पाते हो। क्यों? क्योंकि सारे के सारे प्रोग्राम्स को रैम में लोड होना होता है। तो ये था हमारा बेसिक जो सी प्रोग्राम का। अब ये वेरिएबल क्या होता है? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो रैम में आके लोड होता है, उसके बाद वहाँ से उसका लोकेशन स्टार्ट होता है। तो ये जो हमारा वेरिएबल होता है, ये एक नाम है, जैसे कि आपका नाम है, उसी तरह ये भी एक नाम है जो कि मेमोरी लोकेशन को दिया जाता है। अगर ये आपकी रैम है, तो यहाँ पर एक लोकेशन है, तो हमारी ये मेमोरी के ब्लॉक्स है। मैं भी रफली आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो अगर ये आपकी मेमोरी है, ये मेमोरी ब्लॉक्स में बटी हुई होती है, और जो इसकी बेसिक यूनिट होती है, उसमें एक 0 या 1 स्टोर हो सकता है, जैसे कि हमको में कि जो कंप्यूटर होता है वो किसी भी नंबर को कभी डायरेक्टली स्टोर ऐसे नहीं करता है, 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर करता है। तो यहाँ पर होगा क्या कि एक मेमोरी लोकेशन को दिया गया नाम वही है हमारा क्या, हमारा वेरिएबल। तो ये जो वेरिएबल है ये है हमारा मेमोरी लोकेशन को दिया गया नाम, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करें तो ये डिक्लेयर किया जाता है। मैं टाइप लिखूंगा और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट ए और सेमीकोलन लगा दिया। अगर मुझे एक साथ दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है तो मैं वो भी कर सकता हूं। तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं इंट ए कॉमा बी सेमीकोलन, और उसके साथ साथ मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं इंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी और सेमीकोलन। तो ये भी एक वैलिड सी स्टेटमेंट है। डिक्लेयर का मतलब है कि मैं अपने कंपाइलर को बता रहा हूं, देखो भाई हम चार इंटीजर्स को यूज करने वाले हैं, एक का नाम है ए, एक का बी, एक का सी, एक का डी। इन चारों के लिए जगह जो है रिजर्व कर लो। जैसे कि आप लोग याद है ना बोलते थे कॉल करके कि हेलो हाँ भाई मेरे लिए जगह रख देना। कभी भी आप अपने स्कूल वगैरह में जाते थे जहां पर सीट जो है आगे की सबसे ज्यादा अच्छी होती थी, या फिर अगर आप लोग अपनी स्कूल बस में या कॉलेज बस में जाते हैं तो आप बोलते हैं हेलो हाँ भाई मेरी विंडो की सीट रख देना, तो रिजर्व कर देना। तो उसी की तरह जो है वेरिएबल के लिए भी स्पेस को रिजर्व करना पड़ता है हम लोग को। तो वही रिजर्वेशन है यहाँ पर, तो ये रिजर्व कर देता है स्पेस को। अब यहाँ पर आप जो है कंपाइलर को इस बात की गारंटी देते हैं कि आप यूज करेंगे, और कंपाइलर आपके ऊपर भरोसा कर लेता है कि ठीक है भाई आपको चाहिए चार सीटें, यानी कि चार इंटीजर वेरिएबल्स, इंटीजर जितनी भी मेमोरी लेता है मल्टीप्लाई बाय 4 वो रिजर्व कर लेगा ए बी सी और डी के लिए। अब इनिशियलाइजेशन होता है वो एक अलग टर्म है। इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि आपने वहीं पे वहीं वैल्यू दे दी। अब आपने वहीं पे वहीं वैल्यू देना चाहते हो आप, तो क्या करोगे आप, तब सिंपली आपको जैसे लिख दो, इसमें आप लिख रहा हूं इंट ए इज इक्वल टू 4, यानी कि ए जो है उसके लिए जगह तो रिजर्व कर ही दो, और उस जगह में क्या करो 4 को रख दो। यानी कि क्या हुआ कि आपने वो वैल्यू भी जो है अपने वेरिएबल को दे दी। तो सिंपली यहाँ पर आपने इनिशियलाइज और डिक्लेयर की स्टेटमेंट में कर लिया। आप अपने सी प्रोग्राम में कुछ ऐसा भी कर सकते थे, आपने इंट ए लिखा और उसके बाद आपने लिख दिया ए इज इक्वल टू 4, तो ये भी एक वैलिड सी प्रोग्राम है। तो हम लोग सी प्रोग्राम आने वाले टाइम में और भी लिखेंगे और इन सब चीजों को समझेंगे, लेकिन ये बेसिक से मैं आशा करता हूं आप सब लोग नोट्स ले रहे होंगे। चलो अब आ जाते हैं रूल्स फॉर डिफाइनिंग अ वेरिएबल में। अब एक वेरिएबल का नाम रखने में क्या रूल्स I'm also preparing notes. I also hope that no one is with me, but I definitely think that after some time, a lot many people will actually want to come to this because it happens. Very few people actually end up watching the complete playlist, and those who do really means a lot. So I want many people to just come with me, be a part of this live stream for 24 hours and really work together because it's
going to be an interesting thing. As I say, I also make notes. If possible, after the live completes, I will share the photo of my notes in the description. So you can also, you go with this, you have the notes. So now you can just read, and you are sure that after the live is completed, you will get some notes. So you can also refer that. So, and you will have that personalization. Why I'm Because you don't need to write notes. You can take notes from me. That's it. There are a set of instructions and rules like how can you define a variable, because in terms of variable we give a lot of independence to developer. Like you can call a variable whatsoever you want, but you can't call it such or certain that a computer gets confused. Why are we writing notes? Because let's say after 3 to 4 months we want to come back to what did we studied, to recall. So we need to have some material. You can't have spaces, same white spaces between the variable you are designating to your machine. Hmm. You cannot have a variable which starts with a number or a punctuation or is a part of a reserved keyword. Long, for instance, is a reserved keyword. It's like we first define.
A Genie box. So this is a Genie box. It's a Genie box with name Gamma. So you can only store Genie in Gamma. You can't store oil in Gamma. Bear with me. No one is there. I think someone should come and be a part of it. जैसे कि इंसान का नाम रखने में कुछ बेसिक रूल्स होते हैं कि वो किसी वस्तु का नाम नहीं होना चाहिए, आप किसी इंसान का नाम टेबल या चेयर नहीं रख सकते, उसी तरह या फिर किसी इंसान का नाम आप नंबर भी नहीं रख सकते, तो उसी तरह यहाँ पर सी के वेरिएबल का जो नाम होता है उसके लिए भी कुछ रूल्स डिफाइन किए गए हैं। तो पहला रूल हमारे पास यहाँ पर आता है कि कैन कंटेन अल्फाबेट्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर, ठीक है? तो क्या क्या कंटेन कर सकता है? अल्फाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। तो ये तीन से मिलकर जो है ये बनेगा, अल्फाबेट से मिलकर बन सकता है, अंडरस्कोर से मिलकर बन सकता है, डिजिट से मिलकर बन सकता है। तो क्या हुआ कि जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं int हैरी, तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है, और यहाँ पर मैं लिख दूं int अंडरस्कोर हैरी, ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है। अब यहाँ पर सेमीकोलन तो मुझे टर्मिनेट करना पड़ेगा, तो ये तो जो है हमारा प्रोटोकॉल रहेगा थ्रू आउट द कोर्स, आपको याद रखना है सेमीकोलन लगाना है, ठीक है? अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि अ वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद एन अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली, यानी कि वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, वो स्टार्ट हो सकता है अल्फाबेट से अंडरस्कोर से, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा int हैरी या फिर int अंडरस्कोर हैरी। अब यहाँ पर मैं हैरी 9 कर दूं या अंडरस्कोर हैरी 9 कर दूं तो दैट इज आल्सो फाइन, वो भी चलेगा। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं int, क्योंकि Number मुझे can इंटीजर come वेरिएबल चाहिए 9 afterward. हैरी नाम का, तो ये जो है 9 हैरी नाम का जो वेरिएबल है ये एक वैलिड वेरिएबल नहीं है, ये जो है ये इनवैलिड नाम है। तो ये जो है कांट स्टार्ट विद डिजिट, जैसे मैंने तीसरे पॉइंट मेंशन किया हुआ है, इट कांट स्टार्ट विद डिजिट, डिजिट से 22 स्टार्ट नहीं हो hours सकता। left. हमने पहला पॉइंट यहाँ पर कवर किया, उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट कवर किया, तीसरा भी हमने कवर किया कि डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। अब व्हाइट स्पेस और रिजर्व कीवर्ड की बात करते हैं। अगर मान लो आपने int का नाम int ही दे दिया है, फिर आपने int का नाम लॉन्ग दे दिया जो कि रिजर्व कीवर्ड है, जिनका नाम मैंने आप लोगों को बताया था अभी, तो int लॉन्ग कर दूंगा मैं, तो ये जो है एकदम गलत है और ये जो है एरर थ्रो करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं int लॉन्ग Reserved करूंगा तो क्या keyword. होगा कि ये बोलेगा कि भाई जो लॉन्ग होता है वो होता है हमारा रिजर्व कीवर्ड, आप लॉन्ग नाम नहीं रख सकते, किसी इंसान का नाम टेबल या चेयर जैसे नहीं रख सकते, उसी तरह आप लोग इसका You नाम लॉन्ग नहीं can't रख सकते। name तो a ये हम लोगों ने person यहाँ पर table जो है chair. कवर किया पॉइंट। व्हाइट स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं int और हैरी स्पेस शुभम लिख देता हूँ, तो ये यहाँ पर व्हाइट स्पेस आ गया, तो ये एक इनवैलिड नाम हो गया, फिर से सेमीकोलन लगा दूं उसके बाद भी इनवैलिड रहेगा, तो ये एक इनवैलिड नाम हो गया वेरिएबल का। आप लोग स्पेस जो नहीं लगा सकते। तो मैं आशा करता हूँ समझ You में आएगा have आप लोग को to चौथा पॉइंट भी। use अब यहाँ पर पांचवें और छठे पॉइंट में मैंने underscore. आप लोगों को एग्जांपल्स दिए हैं अच्छे अच्छे। तो एक तो यहाँ पर वैलिड वेरिएबल नाम के हैं, जैसे int हैरी अगर मैंने लिख दिया तो एक वैलिड वेरिएबल का नाम है। फ्लोट हैरी 1 2 3 लिख दिया, ये एक वैलिड वेरिएबल का नाम है। कैर अंडरस्कोर हैरी 34 लिख दिया, एक वैलिड वेरिएबल का नाम है। सारे रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह से इनवैलिड वेरिएबल्स तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पर काट काट के बना के दिखा दिए हैं, लेकिन उसी के साथ कुछ और एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हुए हैं। ये एग्जांपल्स भी आप लोग जो है मद्देनजर रखते हुए अपनी सी प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है छोटी छोटी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। मैं आशा करता हूँ ये एकदम सिंपल था और आप लोगों को समझ में भी आया। अब यहाँ पर बात करेंगे डेटा टाइप्स की। डेटा टाइप क्या होता है? आप लोगों ने भी देखा, मैं int लिखा था, वो क्या था? वो हमारा डेटा टाइप था, यानी कि जब भी मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता A programming language have a data type. Say, why a space is allocated. That space can be filled by a man, woman, an elderly, or a child. So you specify that, look, this is my variable, but before naming your variable, you tell your machine, I want to have a space for a boy. So that is different type of variable we studied. Variable, data type, and constant. Here are data types. These are notes also for the Compre tutorial lab exam, not Compre. Basic data type, integer, character, float, double. I have not heard of double. There are derived data types. I don't know what they are derived from array. They don't have dictionary. I was thinking about it. Kindly don't abuse me. Comment. Enumeration. Does anybody know what is the meaning of enumeration? Let's ask ChatGPT. What is enumeration?
listing item one by one, defining a fixed set of named values. Instead of using random number, you can give them meaningful names. Void. Void. What is a void? Enum use can in enum you can store a set of list. मुझे अपने कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एक इंटीजर वेरिएबल चाहिए या फिर मुझे एक फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि जिसमें डेसिमल होता है उस तरह का नंबर चाहिए और या फिर डबल चाहिए यानी कि मुझे एक बड़ा नंबर चाहिए जिसका प्रेसिजन थोड़ा सा ज्यादा हो। तो ये जो है हमारे बेसिक डेटा टाइप होते हैं। अब बेसिक डेटा टाइप मैंने क्या बताया आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बताया एक इंट, एक मैंने आप लोगों को बताया कैल और एक आप लोगों को बताया फ्लोट, एक डबल। अब Float, ये चार जो होते हैं वो double. हमारे बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं। अब डिराइव्ड डेटा टाइप्स होते हैं। डिराइव्ड डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जिनको बनाने के लिए बेसिक डेटा टाइप्स की जरूरत पड़ती है। तो बेसिक डेटा टाइप्स में आपको यहाँ पे कवर करके डिराइव्ड डेटा टाइप्स होते हैं हमारे, Derived जिनको data बनाने के लिए types are बेसिक डेटा टाइप्स की those. जरूरत पड़ती है। इसलिए Derived data types are those for which you need basic data type to make. You can't make basic data type without making derived data type. Derived data type are derived from basic data type. Maybe like mixture of basic data type. डिराइव होता है कि इनको डिराइव किया गया है बेसिक डेटा टाइप से। तो इनमें हमारे पास आते हैं अरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, चारों को डिस्कस करूंगा डिटेल में। अभी आप इनको होल्ड कर Array, लीजिए। इसके बाद pointer, हमारा एक structure, इन्वोल्यूशन डेटा टाइप union. होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और वॉइड डेटा टाइप भी बता देता हूं आपको। वॉइड का मतलब होता है कुछ नहीं, खाली। तो वॉइड का मतलब कुछ सी नहीं होता है खाली खाली यानी कि कुछ नहीं। तो कुछ नहीं को हम वॉइड बोलते हैं। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ डेटा टाइप के साइजेस रखे हुए हैं। मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक लिस्ट बनाता हूं जिसमें डेटा टाइप्स और वो मेमोरी में कितना साइज लेते हैं और उनकी रेंज क्या होती है वैल्यूज की 32 बिट आर्किटेक्चर के हिसाब से। Okay, so here's the data type size for a 32-bit architecture. What is a 32-bit architecture? You know that different type of operating system are on different architecture based system. 3286 is a different type of architecture. So for different architecture, 1 byte and ranges will be different. So that is a point. But here Harry Bhaiya have particularly listed data type in the 32-bit architecture. What I will do, that I always do, I will write down it because it can come in exam. In mid-sam lab test. For a kind information, these are actual data types.
Many of them are just expansion of basic data type. Sort, signed sort, unsigned sort. Signed sort int. Unsigned. Long int. Signed long int. Unsigned long int. Float. How you know other, but for others, what I will do, I'll just write double, long double. It's in byte. I can just write byte here. So one, 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 two, 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 two. तो हमें twos unsigned sort int तक two two ही है. Then last two को छोड़ के बाकी सारे four four हैं. एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं. I thought it is bits. It's bytes. Here also you can't just write anything.
मतलब there's a list. I mean, you look at here now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You can't write more than 10 numbers. No. And I was writing 15, 20 letters, numbers. This is so much. आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है क्या चीज कितनी मेमोरी ले रही है, ये आर्किटेक्चर टोटली डिपेंड करता है। जैसे कि कैर है, अगर मैं मान लो लिखता हूँ कैर, तो मैंने अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसे लिखा, मैंने लिखा कैर सी इज इक्वल टू सी। तो मैंने कहा अब यहाँ पर जो सिंगल कोट्स होते हैं ये डिनोट करते हैं कि कैरेक्टर है, तो मैंने कहा कि सी के अंदर मेरा ये स्टोर कर दो, तो क्या होगा, कितनी मेमोरी लेगा मेरे रैम के अंदर। तो मैंने जैसे कि बताया For character, you write single quote. In Python, we used to write double quote. Here, single quote. वेरिएबल कुछ नहीं होता है, मेमोरी के अंदर लोकेशन का नाम होता है। तो जो मेरी रैम वेरिएबल कुछ नहीं है, मेमोरी के अंदर लोकेशन का नाम है। होगी रैम के अंदर, वो बोलेगा भाई ठीक है मैं आपके लिए 1 बाइट यानी कि 8 बिट्स, 1 बाइट इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1 8 बाइट बिट्स। तो में ये जैसे आपके आपको पता पास होना चाहिए 8 बिट्स और 1 बिट में 0 या 1 स्टोर हो सकता है। तो जो 8 बिट है हमारी वो रिजर्व हो जाएगी। तो हमारी एक रैम बिट में जो में 8 बिट होती है वो रिजर्व हो जाएंगे। अब अपनी रैम 16 की ड्यूरेबिलिटी उसका एक लेटर्स। अनुमान आप लोग को दिलाता हूँ। अगर मान लो आपकी 4 जीबी की रैम है, अभी तो 32 जीबी की रैम होती है मशीन में, बहुत कॉमन है, लेकिन मान लो 4 जीबी की रैम है, 4 जीबी मतलब 1 जीबी में आपकी होती है 1024 एमबी, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1024 एमबी, और उसके बाद ये हो जाएगा 4 इंटू 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 केबी किलोबाइट, और उसके बाद हो जाएगा 4 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट्स। और इसी को अगर मैं बिट्स में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं ये पूरा जो है वो यहाँ पर लिख दूंगा और इसको मल्टीप्लाई में कर दूंगा किससे 8 से। इतने जीरोस एंड वंस आपकी जो रैम है, आपकी मेमोरी जो है वो स्टोर कर सकती है। तो आप इसको कैलकुलेट करके और देखें कि कितना बड़ा नंबर है ये। तो हमारी जो रैम होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, उसमें बहुत डेटा आ सकता है, इसलिए हम इतने बड़ी बड़ी मूवीज और इतने बड़े प्रोग्राम्स ये सारी चीजें चला पाते हैं। तो ये जो कैरेक्टर है सी इज इक्वल टू सी, ये बहुत ही छोटी सी चीज है हमारे रैम के लिए, तो वो रिजर्व कर देगी। लेकिन जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम कॉम्प्लिकेट होते जाएंगे, हम एरेज बनाएंगे, स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी, तब क्या होगा कि हमारी रैम जो है एक ही बार में बहुत सारी कंज्यूम करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये जो रैम है बहुत ज्यादा, ये रैम कम भी पड़ जाएगी आपके कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स के लिए। तो इस बात की समझ आप लोगों को होनी चाहिए। अब उसके साथ साथ हमारा साइन कैर होता है, अनसाइन कैर होता है, शॉर्ट होता है, शॉर्ट साइन शॉर्ट होता है, अनसाइन शॉर्ट होता है, एंड साइन एंड, और इसी तरह हमारे पास फ्लोट और डबल होते हैं। तो ये सारे डेटा टाइप्स होते हैं और कितनी मेमोरी लेते हैं 32 बिट आर्किटेक्चर में। तो ये जो है यहाँ पर जो मैंने वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है, इनको आपको याद नहीं करना है, और ये किसी भी एक आर्किटेक्चर टू आर्किटेक्चर वेरी करने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि आपने रट लिया 32 बिट आर्किटेक्चर के लिए है। अगर कोई दूसरा आर्किटेक्चर है, यानी कि कोई दूसरी मशीन है जो कि इंस्ट्रक्शंस को कुछ अलग तरह से प्रोसेस करती है, तो वहां पर जो कंपाइलर है उसको अलग तरह की मेमोरी एलोकेट करेगा। मैंने अक्सर देखा कि लोग इसको रटवा देते हैं बच्चों को कि कैरेक्टर 1 बाइट लेता है और शॉर्ट 2 बाइट लेता है, इंट 2 बाइट लेता है, कहीं कहीं 4 बाइट भी लेता है, तो कुछ लोग को रटाते नहीं, इंट 4 बाइट लेता है। भाई आर्किटेक्चर टू आर्किटेक्चर डिपेंड करता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आप लोग यहाँ पर अपने कंप्यूटर में लेके चलूंगा और वहां मैं आप लोग को विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर दिखाऊंगा एक दो चीजें जो कि इस चीज से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा मेरा विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पर अगर मैं लिख दूं, मैंने यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, मैं काम करता हूँ इस प्रोग्राम को ऐसे कैसे रखता हूँ, एक नया प्रोग्राम बनाता हूँ, साइज डॉट सी नाम से बनाता हूँ, और मैं काम करता हूँ साइज 1 डॉट सी नाम से बना देता हूँ। और यहाँ पर मैं करूंगा क्या, मेन लिखूंगा और इंटेलिजेंस जो है विजुअल स्टूडियो कोड की, या फिर काम करता हूँ यार, मैं ज्यादा इंटेलिजेंस के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, मैं इसको कंट्रोल करके कॉपी करूंगा, कंट्रोल वी करके पेस्ट करूंगा, और यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा, या मैं लिखूंगा परसेंटेज एलयू। अब एलयू जो होता है वो अनसाइन लॉन्ग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और मैं यहाँ पर लिखूंगा साइज ऑफ, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा, अगर आप लोग देखेंगे, मैंने यहाँ पर साइज ऑफ लिखा, मैंने साइज ऑफ यहाँ पर लिखा, तो ये देखो यहाँ पर मुझे आ गया, मुझे दिखा रहा है साइज ऑफ। मैं इस पे होवर करूंगा तो ये मुझे सिंपली मुझे बता रहा है कि साइज ऑफ फंक्शन है जिसको हम यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर मैं इंट लिख देता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा Interesting. In Ubuntu, we don't know because
Size of I would want to check the size of any different data type and feel hungry. Can I pause? After I'm feeling hungry. I have to eat something and then come back. A short break of 30 minutes. We'll come back at 4:30. Short break of 30 minutes because I need to eat something. GCC size 1.c तो GCC लिख के और size